So, very good afternoon to one and all the participants, those who have joined this cloud meeting. On behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar, I welcome all of you to this 8 days NEP orientation and sensitization course. Before moving towards the course, I would request all the participants to open the camera. सभी सहभागी मित्र अपने कैमरा ओपन करें। आदरणीय प्रशांत साठे सर हमारे जो पहले वक्ते हैं और इस उद्घाटन समारोह के चीफ गेस्ट भी है, वो भी इस क्लाउड मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजी नगर की ओर से मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कुछ ही पलों में हमारे आदरणीय डायरेक्टर प्रोफेसर पाटिल सर भी इस क्लाउड मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। So I would now request Gaurav to start the university banner and the song. सागराचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत वाऱ्यातही मराठीचे दिवे लख घरोघर संत महंतांचे विरागी गीत आमुचे वादळाचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे तंतु तंतु संघर्षाचा पैठणीत भिनलेला नक्षीतच पक्षी पक्षी विजयाचा मिळलेला सोन पहाट उदयाचे गीत आमुचे उजेडाचे इतिहासाचे जनमनाचे गीत आमुचे जागराचे प्रज्ञेचा सूर्य नवा शब्द शब्द उजळून गेला समतेचा संगराचा अर्थ ढाळून गेला विराट विश्व
विशाल संस्कृतीचे गीत आमुचे जीवनाचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे गीत आमुचे आकाशाचे गीत आमुचे सागराचे इतिहासाचे जनावराचे गीत आमुचे जागराचे. Thank you, Gaurav. You can stop the university song. So, on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Baba Saheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhaji Nagar, I welcome all the selected participant of this NEP orientation program, 8 days NEP orientation and sensitization course. Also, I welcome our honorable guest, Professor Prashant Sathe, sir, who is the keynote speaker and the inaugurator for this NEP orientation and sensitization course. Also, I welcome our honorable President, Director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Professor S.S. Patil, sir. Friends, this 8 days working program will have the topics to be covered like ICT, IKS, Indian Knowledge System, then research methodology, skill development, uh, then holistic response, multidisciplinary education. So we hope that at the end of the day, when this course will be over, all the participants will carry something in their bags and they will deliver that thing to their colleagues, to their students, and to the society. So that is the aim and objective of this NEP orientation and sensitization course. Coming back to this inaugural session, the chief guest, Professor Prashant Vittal Sathe, sir, currently working as a professor at Biran, Maharashtra College of Commerce, acting as a coordinator of Research Center and Postgraduate MCOM course run by the college. His total experience is of 30 years. His academic qualification is MCOM, MPhil, DTL, PhD set. He has taught more than 20 subjects in commerce and management. He has successfully guided 6 students for their PhD and 9 students for their MPhil degree. He has also presented research papers at national and international journal and also published research papers in well-reputed national and international journal. He has co-authored 7 books in the subject of marketing management, office management, business administration, and principle of economic. He has contributed at university level as a subject expert for selection of teacher, as a member of SCOT committee for university exam, Savitribai Phule Pune University, then chairman and moderator and paper setter of committee at UG and PG level, then worked as a district coordinator for practical examination, has also been member of local inquiry committee appointed by university, then panel of PhD interview selection committee, then special invitee for syllabus setting of subject of marketing management, observer and evaluator of Avishkar research project competition at state level. Also at college level, he has been the member of local management committee, then coordinator of seminars and workshop, worked as a member of sports committee, NSS timetable committee, then IQAC committee, anti-ragging committee. At social level, working as a presiding officer of Lok Sabha, Vidhan Sabha election, then member of census program, Government of India, then president of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Maharashtra at national level, student organization, then member of Pune University College Teachers Association, then board member of Vidyapit Vikas Manch at Center of Education Development, then also member of Shaniwarpet Yuvak Agadi and resource person at Yajda, and also resource person at Training Center of Cooperative Department, Government of Maharashtra. So again, I welcome Prashant Sathe sir, and I would now request him to deliver a short inaugural address to all of us. After that, he will continue the lecture. Okay. Namaste to all. Kapish sir, namaste. Am I audible? Namaste. Yes, sir. Yes, yes. Patil sir, namaste. Namaste, sir. Namaskar. Namaste. So, it's my honor and pleasure to be here as a chief guest or whatever name you call. I want to interact with my all dear colleagues.
So first of all, I just hereby declare that this FDP 8 days FDP program, which is organized by BAMU University, Babasaheb Ambedkar Marathwada University, and that is director of this course, Dr. Patil sir, and my well friend Rafiq sir. So this is inauguration function, though it is been declared that it is inaugurated, and I congratulate all participants that all of you have selected right course for your FDP, because there are lots of options are available nowadays for every senior college teachers for FDP, but to have an idea or knowledge about national education policy announced in 2020, so it is required nowadays for every college teacher, and that's why you rightly opted this course. And since I am associated with this university for last so many years, and I'm lucky or I'm fortunate that every time I got an opportunity to have a 1 or 2 session to interact with all dear colleagues or participants. So again, I express thanks and gratitude, particularly to Patil sir, Vice Chancellor of this university, Pulari sir, my friend and coordinator, Dr. Mohammad Rafi sir. So with this, because as said by Rafi sir, again I have to continue with my session. So without wasting, basically I am a teacher of commerce and costing. So unnecessarily wastage of time is of no use. So I will conclude by 2 minutes, 2 words only. So I express our congratulations on to all participants, and hope so, and sure, hope so and sure, both words are important, that you will listen every session, as it is online. So online session itself is a very inherent limitation. Though off, like, though cameras are off, cameras are on, there are so many types of otherwise incidents are there. But I'm sure that all of you are honorable and sensitive persons, and that teachers, and that is why you will attend the session throughout with full concentration and dedication. So with this, I conclude my thought speech, and again I express thanks to Dr. Patil sir, Honorable Patil sir, and Mohammad Rafi sir, that they gave an opportunity to be here. Thank you. Thank you, sir. Again, I would request all participants to open the camera. कैमरा खुला रखे, एटलीस्ट इनॉग्रल सेशन और वैलिडेटरी सेशन, 2 सेशंस के लिए आपके कैमरा ओपन रखे. ऑल पार्टिसिपेंट kindly open the camera. So the president of this inaugural session, director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Professor Satish Patil sir, senior professor, Department of Environmental Science of our university, and currently director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Center. Professor Patil stands as an luminary in the realm of environmental science. His illustrious career, woven with accomplishment, accolates and profound commitment to the field, currently holding the esteemed position of senior professor at our university. Professor Patil sir has left an indelible remark through his multi-faced contribution. Dr. Patil's journey at our university has marked by a series of administrative roles, each testifying to his leadership, acumen, and dedication to the academic excellence. No voice is getting officer. So sorry to interrupt. As I told that Professor Patil sir is a senior professor in our university in Department of Environmental Science, currently director of this UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. He has also served twice as a BCUD director of our university, and also in charge officer academic planning. And also he has assumed twice the mantle of head of Department of Environmental Science
way back in the year 2006, 2008, and 2017 to 2020. Also, he has 2 patent innovation to his credit, and also have a total outlay of 76 lakh in research project. Also, he has guided successfully 13 students under his able guidance, and has actively participated in 19 international conference and 58 national conference. Also, he has visited to Italy, Sri Lanka, Nepal, Bhutan for academic purpose. Also, Dr. Patil sir has published 134 research publication in various national and international journal with an impact factor of 52, and has also penned 14 books and 5 book chapters. Also, he has an international collaboration with University of Rajshahi, Bangladesh, and Eastern University, Sri Lanka. Also, he has been awarded the Environmentalist of the Year 2017 and Scientist of the Year 2018 award, and also Clean Environment Promotion Award way back in the year 2008. Also, he has been the life member of Indian Association of Aquatic Biologists and International Congress of Chemistry and Environment and Microbiology Society of India. So I would now request Professor Patil sir to deliver a presidential remark to this inaugural session. Good afternoon, all of you. The inauguration of this NEP sensitization orientation program affected Prashant Sathe sir, my colleague Dr. Rafe, and you all distinguished fellow participants. This MMTTC of Dr. Babasaheb Ambedkar University, providing a continuous and update training programs that enables teachers to stay current on educational advancements, interactive teaching practices, and technological tools. As an institution, we are trying to cultivate an educational environment that values diversity and inclusiveness, ensuring the teachers which are equipped to handle the learners from the various backgrounds and the needs effectively. Of course, the mission of this center is to develop a leadership skills and strong sense of ethics in educators, preparing them to be role models who contribute positively to the academic institutions and society at large. On the background of this NEP, that we should show our commitment to the curriculum development on cultivating a distinctive Indian approach to the education and research that draw the strength from outreach intellectual heritage while embracing the contemporary global advancements. And we should also actively work to decolonize our curricula and research methodologies, ensuring that they should reflect our cultural ethos, national aspirations, and fundamental concept of swa or selfhood that defined our unique identity. And we should also nurture an inclusive academic environment that empowers all the stakeholders, particularly enhancing the every stakeholder's participation in research, particularly the youngsters. We should encourage, particularly for the research and innovations. As far as the convergence is concerned, it is very, very necessary to that we should know what is our strength and which particularly lies in our ability to create a meaningful convergence between the different knowledge systems. And we should be able to also strengthen our connections with India's traditional knowledge systems, integrating them with the modern scientific approaches to create a unique solutions for the contemporary challenges. And this kind of convergence, which particularly being characterized by the balanced approach that blends a global competitiveness with the local relevance while maintaining our distinctive swa or self-identity in all our research and innovation endeavors. Of course, it is also very much required to have a foundation of our institutional growth, which will build on our
robust collaboration across the levels, guided by the principles of Samajik Samrasta, that is, we call it the social harmony. And we should also have enhanced collaborations, mentorships, and leadership for creating a network of knowledge and expertise that transcend the social barriers. So that we need to bring changes in our approach, which will emphasize the co-creation and co-clustering, which particularly enables the collective innovation and the shared growth. We should also foster a meaningful partnership between the academic institutions, industry, and community organizations. Organizations which are ensuring our collaborative efforts, which promote the social harmony and the inclusive growth. And it is very, very important to have a connect, because you know that we need to establish and maintain a strong linkages between the local communities, creating a dynamic channels for the knowledge exchange and the societal engagement that is also very much needed. And the it should be also keep in mind that we need to establish a mechanism for the continuous feedbacks, adaptation of research priorities, which will certainly evolve in response to the societal needs. That is very, very needed, because otherwise our education will be of no use unless and until it is not being connected with the society. And this will create a responsive and dynamic academic ecosystems that serves the nation's development goals while promoting the social harmony and the family values. Of course, none other, not a less that we should see that the environmental sustainability, which particularly stands on the cornerstone of our institutional commitment, reflecting our traditional values of living in harmony with the nature. So that though this mission, whatever we are talking about, we envision our education systems, we envision ourselves as a catalyst for the transformative changes, where the research excellence meets societal relevance, innovation serves environmental sustainability, traditional wisdom enriches the modern solutions, collaborative spirit drives the national progress, leadership that translates to the social impact. And I believe that when we are talking about the teachers, we should have a commitment to the students, society, and excellence. And we should see that the basic human values to become a good teacher, that we should inculcate with this. I welcome you all fellow participants for this NEP orientation sensitization programs. I believe that you will enjoy all the sessions during this 1 week orientation program, and you will have every opportunity to interact with all the resource persons and have a participative learning. I also thank the Prashant Sathe sir for accepting our invitation within a short period of time, and he has given his valued time to interact and to share his experiences with us. I also thank you all fellow participants that you will enjoy every session, and the experts will be from the pan India. They will share knowledge and their experiences with you all fellow participants. I wish you all success. I also thank my colleague Dr. Rafe and my technical team that will give a backup to you to get strongly connected with on the online platform. I thank all of you and welcome for this NEP orientation and sensitization programs. Thank you very much. Thank you, sir. So not taking much of time, with the permission of our President, Professor S.S. Patil, sir, I declare that this inaugural session is over. And now we will switch to the technical session of Professor Sathe, sir. Over to you, Sathe, sir. नमस्ते. मोहम्मद रफी सर आवाज येतो? Yes, yes, sir. Okay, thank you.
So again, as a first technical session of this FDP program, Honorable Chairman Dr. Satish Patil sir, Mohammad Rafi sir, and all my dear colleagues. So we'll start with the session. Now, friends, that after Corona, particularly, we are so much so familiar or seasoned or well acquainted with this online mode of teaching and learning process, either as a compulsion or as a requirement or whatever. And now it becomes a practice, it becomes a routine, what we used to call as the apat dharma during Corona. Now that the term apat dharma has lost, and now it's a regular feature of our teaching learning process through online mode. So actually, virtual process or virtual mode is okay, allowed, no problem, or it is quality oriented also. But what is my perception, individual perception, though I am delivering my session through online mode, but my individual perception about this, it is not that way very, that is good in enhancing the quality of teaching learning process, though it has so many pros and cons in a way. But online mode is, we have to discourage in a way, one way or other. Of course, as this is a FDP online, approved, accepted, authorized by UGC and university, so there is no any otherwise part of criticism. But first of all, I put my remark as a online mode, because we have to have come with offline session. But okay, that is different part. Now the point is, from 29th of July 2020, as I hope that all the 90, just check the number, 89. Now I hope that the 89 will remain, this number will remain, continue till the end of my session. Hope so, not sure. But whatever participants, those who are here, I hope and I'm sure that all of you are from senior college or higher education stream, because as it is a course designed by university, BAMU University, so that is why all of you are definitely belongs to associated with higher education stream, particularly UG and PG teaching learning process. So since 29th of July 2020, we are so much so well acquainted with, we are so much so seasoned now, because now we are in 2025. So we are seasoned rather. We have listened this NEP so many times here before, in one way or other, through seminar, through webinar, through discussion, through meeting, through roundtable conference, through research paper, through research article, through number of options are available. I am not making this comment in a negative way or in a discouraging part of, but this is the reality that since last 4 years, every one of us, we are well acquainted with the term National Education Policy announced by central government on 29th of July 2020. As all of you again know that unfortunately, in the year 2021 and 21-22, as far as all over world is concerned, we suffered as far as Corona is concerned. So because of the effect of Corona, impact of Corona, entry of Corona, whatever name you called, we literally lost 2 years. And during that 2 years, what the good, good in the sense, what the option available with us to have at home only, because certain days or certain months during that time completely at home, 100% without any. So that is why we are so much so familiar with online mode. So the 484 pages document of National Education Policy full text and 63 pages of National Education Policy, which is the gist of it. I hope and I'm sure that many of you already go through with that document in one way or other. That the gist of National Education Policy of 63, 64 pages and the complete document of 484 pages announced and published by central government during 2020.
But what is next? Because only to know the text and only to know understood the policy, what is the use of it unless and until it is practically being implemented? Because the name itself is very clear. It is P. It is P. P means policy, national education policy. It is not the decision. It is not the GR. It is not the circular. It is not the act. It is not the statute. Unless and until policy is being converted into some form of one way or other for implementation, it is of no use. Obvious. But to know policy is very important. What is the object of this session? I hope to have the to know what is mentioned in NEP and how to put it in practice, how to implement it in practice. Because the role of central government is over. Over in the sense they announced the policy. Now it is the role of university, it is the role of state government. Of course, it is the role of central government, HRD ministry and all concerned ministry to concentrate and put attention for its implementation in its real sense. And I'm sure that all these authorities, right from college, university, state government, central government, various ministries belongs and associated with this, they are trying their level best to put it in practice as far as implementation is concerned. Of course, there are some reservations or there are some problems or issues they are there. At the latter part of my session, we will discuss that part, that also, that is issues and problems. But what I feel personally, instead of proceeding with in the beginning itself, we started to discuss what are the issues and problems and reservations and objections about NEP. Then I'm sure that all the now 85, now the number has declined 85. Now four number has reduced, and I'm sure that you take it from me, Rafi sir, that at the end of this session the number will 75 or 80. This is the feature of national online mode, and that's why I said in the beginning that entry and exit there is no any control as far as now it is 84. See the number, see, and it is not as far as ethically correct, because all of you are the honorable members of this and honorable participants. You are in higher education, but okay, under the good name of range, under the good name of non-availability of power, under the good name of supply, under the justification, there are so many justifications are there that no range is there, no supply is there, problem of whatever. But the reality is this: not a single meeting I observed 100% attention attendance from the introduction to conclusion. This is the reality of online mode. That is why what I said in the beginning, that online mode we have to rethink again as far as this higher education teaching learning process is concerned. But as everyone, every institute, every teacher, every university, every department, every government encouraging this digital platform, so we have to accept, okay, digital platform, but the sense and emotions and feelings, they are sometimes absent in this online mode. What I feel personally, coming to the basic point of my discussion, as far as NEP is concerned, uh, so all of us, we are now familiar with this NEP, though there are some limitations, but we have to make a point that I remember and I know that before 2020, here before, the policy was announced in 1986, and then next policy announced in 2020. So the policy which was announced in 1986, again it is revised in the year 1992-93, and then it is continued. So what the point I want to focus, that 5 to 6 years, I repeat, 5 to 6 years, there were discussions and etc. about that time policy announced during 1986, because at that time that policy was relevant. At that time the policy was correct as per the need and requirement of that time. Though whichever government, it is not the question that this is the policy announced by BJP and this is the policy, this was the policy announced by Congress, and leave apart political party intervention. This was the policy of government in 86, and this is again the policy of government in 2020. So which party is not material? Point is, in 86 also, 6 years, after 6 years or 7 years rather, then it started in its real sense.
in the same sense or in the same way, for example, in the year 2020, the policy was announced, and unfortunately, what I said in the beginning, that we were lost 2 years, 2.5 years almost during Corona. So now it is 25. So what is my perception or what is my point is, for example, this year or next year, maybe by 26 onwards, it will 100% streamline as far as implementation of NEP is concerned, because the drastic change has took place in this national education policy as far as structure is concerned. Of course, this is not my point of session, or this is not the session of mine as far as the structure is concerned. That is 5 plus 3 plus 3 plus 4. But I'm sure that every participant, those who are here, all of you aware with this 5-3-3-4 structure. If you are not, then it is of no use to have be in higher education, because in a way we are not that way very concerned with this 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure, because we are in higher education. Higher education means first year, second year, third year, fourth year, fifth year. Now it is revised structure: 3 years degree, 4 years degree, 5 years degree, 132 credits, 176 credits, 220 credits in a way. But unless and until we are aware with, we need to know what is happening or what has happened in 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure, we will not be in a position to match this with our structure of 3 years degree, 4 years degree, 5 years degree program and higher education. But I will not spend time, and I'm sure that all of you are aware with this structure of 5-3-3-4, because I'm in commerce faculty, I'm teaching. So in costing, what we taught is a finished product of one is a raw material of next. So finished product of 5-3-3-4. In a way, finished product of 5 is a raw material of 3. Finished product of 3 is a raw material of next 3. And finished product of next 3 is a raw material of next 4. That is why 5 plus 3 plus 3 plus 4. That it in a way 12th standard, because previously before 2020, as you know, the pattern was 10 plus 2 plus 3, 10th, then 12th, then plus 3, FY, SY, TY, then plus 2, PG 2 years. It was a tradition, that is what is a routine structure, what we are familiar with. I hope that all the participants, those who are here, at least 80% or 90% of you are familiar with this 10 plus 2 plus 3 plus 2 structure. As far as that Patil sir or that generation might be, they have passed with 75. At that time there was 11 PD, FY, SY, TY, pre-degree, post-degree likewise. But after 75, the structure was 10 plus 2 plus 3 plus 2 in a way. Now, again, I repeat that this is not the point of my session to discuss on the structure part of 5-3-3-4. But point is, every participant, those who are here, as I'm sure that you aware with this structure. The reality is this, because as education is is a part of concurrent list. But for example, the role of state government is also there, and the role of central government is also there. Particularly school education, and there is a difference in between school education and higher education. As far as higher education is concerned, it is in concurrent list, because our salary is being made by the state government for those who are in grantable. Again, there are two parts of haves and have not, grantable, non-grantable. But again, I don't want to deviate from my discussion. That is, what are the problems of grantable and non-grantable, because this is not the session of any organization of teachers unit. Coming to the point, but as far as this grantable and non-grantable part is concerned, we as a teacher or we as a professor in higher education, we must be aware about this structure of 5-3-3-4. Then and then only we will be in a position to implement it in our higher education. Now, what is the reality all over the states? That the structure of 5-3-3-4, it has not been started yet in any of the state. One way or other, some few states are exception. Some of the parties, those who are from Karnataka or those who are from other states, because I have traveled all 44. As far as our organization is concerned, we have 44 prants, we have 44 units. So I have visited almost all prants in the country.
So very few states are there, those who have started. But they are very much eager, they are very much curious, or they are very much planned for starting this. Took the example of Maharashtra, for which I belongs to. In Maharashtra, for example, this academic year, now they will implement it through first stage, that is 5, then 3. Then after 2 years, they will have that +4. Point is, as far as structure of a national education policy is concerned, we are concerned with 3 years degree program, 4 years degree program, and 5 years degree program. I am in front of this group, such group, who is associated with this CGPA with 3 year, 4 year, and 5 year degree program. But the final product of 5334 is a raw material of our 3 years degree program. In the policy itself, if you go through with the policy document, either gist or full text, you will realize that in the policy itself, it is being mentioned that the complete implementation, that is comprehensive implementation, complete implementation in its real sense, it will took place in the year 2030. So from 2030 to 2040, period of 10 years, there will be complete that is implementation of national education policy, and what is being mentioned in the policy document by policy makers. Honorable Kasturi Rangan was the chairman of that committee. They have mentioned that government need to revise the policy document in the year 2040, and they have to announce next document, because ideally every after 20 years, there will be a change in the policy. But what happened in 86, it was announced, and next policy announced in the year 2020. So there is a huge gap in between, and that is why I'm not using the word chaos, or I'm not using the word disorder. But what is going on right now, since last 34 years or almost 30 years, we are practiced with one system, and there is a change in that system. Our generation, we teachers, though we are sixth pay, though we are having 6,000 grade pay, 7,000 grade pay, 8,000 grade pay, 9,000 grade pay, 10,000 grade pay, table 14, table 13, table 12, table 11, whatever ladder we have, but we are the product of that system. And now the structure has changed, and that is why definitely there will be some chaos will be there will be some disorder of action, there will be some either acceptance or rejection, whatever. So that is why what I said, there is no need to have any sort of frustration or any sort of otherwise negative. No doubt it will take some time to have to implement it in practice in its real sense. But we are moving, particularly in Maharashtra. I'm proud of. Again, I repeat, at least in Maharashtra, at senior college level, we have started to implement NEP. I'm not saying, I'm not using the word 100%, but almost 60 or 70% expectations of national education policy we have already started. Though it has some plus and minus. I am not making the comment that this is 100% okay. But though it has some plus or minus, but since 2023, all autonomous colleges in Maharashtra, as I belongs to Maharashtra and Pune, I am confidently, and as I am part of it, that is why I am making this statement and comment. In 2023, all autonomous colleges in Maharashtra, they started to implement NEP at higher education, and all non-autonomous colleges, there are 87 autonomous colleges and all other institutes, they started to implement NEP, not 100%, obviously, it is not a magic stick, but they started to implement from 2024. So at least in Maharashtra, we are in the process of implementing national education policy at higher education level. Now, some few points I want to emphasize on this through this platform, on that is online platform, that we need to understood, we need to
have the clarity of concept or understanding of the points or principles which are being mentioned in national education policy. Now, there are so many negative as well as positive. First, as I said, it's a policy. Second, it is not a GR. Third, it is not a rule. Next, it is not a circular. Next, it is not any recommendation made by either university or government or whatever, but it's a policy. And we have to have adopt. No, it is not. I'm not devaluating the importance of policy in a way, but it's a policy. Unless and until it is being converted into some format, format by way of order that we have to accept. But even if it is not being converted through GR or through circular or through notice, but if you go through with 17 points, which I'm going to make it one by one hereafter, if you go follow all these 17 points in our college, at our university, at our classroom, then whether it is being converted into act or rule or GR or circular or notice, it has no any meaning. But we as a teacher, we want to develop, we want to make some change, we want to have some unique part of any teaching learning process, then definitely if we follow at least out of 17, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 points, then definitely, even though there is a rule or there is a GR or not, we will be in a position to implement the national education policy at our classroom level. What is my point? As I am teaching in my college, for example, my college is Brihan Maharashtra College of Commerce. I am teaching to UG as well as PG. UG I am teaching costing, PG I am teaching costing. For example, while teaching costing is one of the is my subject or is my paper. For example, it you also have your own subject, you also have your own class and UG and PG level. Now, just for example, recognizing, identifying, and fostering. I repeat the sentence again. Recognizing, identifying, and fostering the unique capability of each student. I repeat, recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres. Leave apart all other sentences. We have to focus on recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of student. For example, there are 30 students. Literally, there are 30 students in my class. Those who are took the admission for MCOM and those who opted costing as a special paper, as a major paper, because now again we are familiar with major paper, minor paper, OE, GE, VAC, VEC. We are seasoned with. We are very much seasoned about major paper, minor paper, value education, vocational education, skill enhancement, IKS, on-the-job training. We are again so much so well acquainted with all this terminology. Leave apart all this. You as a teacher, you want to implement NEP in your at your college level, at your classroom level, at your university level, then try to identify, try to recognize the capability of every student. Very simple, very possible. There is no any impossible part of. What is the job of our teacher? As a teacher, we have to identify what are the capabilities, because the capability of every student is different. I'm using the word capability, I'm using the word capacity. I'm not discriminating the student from one with other. All are equal, no doubt. But capabilities of every students are different. Some are interested in writing, some are interested in listening. One number of choices are available. So we as a teacher, this is the first principle mentioned in national education policy as far as its implementation part is concerned. We as a teacher, of course, this is not the principle applicable only to teacher.
This is the principle applicable to all educational fraternity members, that is management, samstha chalak, principal, non-teaching staff, everyone. But particularly we are teacher, as we are in teaching profession, and I'm in front of teaching community. So that is why we as a teacher need to recognize and identify the unique capabilities of every student by conducting different tests, by interacting with him. Friends, that is why such type of knowing the capabilities through online is not possible. That is why again and again I come to the same point of my connotation that online has its own limitation. You may have complete the formalities and compliance and submission and marks and Google form and all and all and all and all. Personal interaction, in classroom interaction, I am reading, I am confining in classroom interaction is very much important, because students are in front of you, you are in front of them, their their eye language, their facial expression, their gestures, their postures, all these are counts as you are teaching communication also. So one way or other, you have to develop the test, you have to develop the communication skill, you have to develop some modus operandi to know and recognize and understood the capability of every student. Because once you know the capabilities of every student, then you may proceed further for delivering him a correct knowledge, that is required knowledge, that is whatever knowledge he expect, whatever knowledge he demand. So this is the first principle of national education policy. Coming to the next, accordingly, because it is well connected with one with two, two with three, three with four, four with fifth, etc. It is forward linkage and backward linkage concept. Those who are in research process, you heard this term, forward and backward linkage concept. Chapter 1 with 2, 2 with 3, 3 with 4, 4 with 5, and exactly reversed part of. So accordingly, you have to, what is the object in a way? To achieve the foundational literacy and numeracy. What is lagging behind nowadays? There is a foundational literacy and numeracy is lagging behind nowadays because of availability of e-mode, because of availability of calculator, computer, mobile, tab, number of options are available. We literally lost our memory. As in Marathi, I used to say, afterwards I will say in English, आम्ही वर्गामध्ये पाढे म्हणून घेतो मुलांकडनं, पाढे. I am teaching costing. For example, many of you have heard this maybe some first time. आता मला माहिती आहे, मी 2 वाक्य मराठीत बोललो की सजेशन बॉक्स मधनं कुठली तरी सूचना येणार आहे, सर प्लीज से इन इंग्लिश, वी आर नॉट अंडरस्टूड. I know that, but in national education policy, again, you have to have multilingualism. आपको हिंदी भी आनी है, अंग्रेजी भी आनी है, आपकी मातृभाषा भी आनी है, और आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, वो भी आनी है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी और डिस्कशन. कमिंग टू द पॉइंट, just those who know Marathi listen, those who don't know Marathi leave apart. I will not repeat. Point is, पावकी, निमकी, दीडकी, अडीचकी, आउटकी, and akkarki. Friends, I personally know first two, Pauki and Nimki, because my mathematics teacher in the beginning, he taught me. He taught me the Pauki Nimki. But remaining part I am not, because he that doesn't at that time he don't taught me. But my mother, just 4 years before he passed away. She knows all this numeracy part of. I just go through with the Pade, Pauki. For example, those if you know, please listen. Otherwise, leave apart. एक पाव पाव, बे पाव अर्धा, 3 पाव पाऊण, 4 पाव 1, 5 पाव सव्वा, 6 पाव दीड, 7 पाव पावणे 2, 8 पाव 2, 9 पाव सव्वा 2, 10 पाव अडीच, 11 पाव पावणे 3, 12 पाव 3, 13 पाव सव्वा 3, 14 पाव 3.5, 15 पाव पावणे 4, 16 पाव 4, 17 पाव सव्वा 4, 18 पाव 4.5, 19 पाव पावणे 5, 20 पाव 5, up to 100. 100 पाव 25 means 1/4. Pauki means 1/4.
एक निम निम बे निम एक तीन निम दीड चार निम दोन पाच निम अडीच सहा निम तीन सात निम साडेतीन आठ निम चार नऊ निम साडेचार दहा निम पाच अकरा निम साडेपाच बारा निम सहा तेरा निम साडेसहा चौदा निम सात सात likewise up to 150. So I know 1/4 1/2 पाव की निमकी दीड की 1.5 अडीच की 2.5 out की 3.5. So this type of numeracy is expected. But in Marathi, what we used to call आढात नाही तर पोऱ्यात कुठनं येणार. Teachers are themselves not aware about all this numeracy part of. Then how will they percolate to the students, and what is the right to us to make some critical comment on the quality and of the students of the present generation? And that is why it is specifically being mentioned. See, I'm not making a comment otherwise by exaggeration or by enthusiasm or by some sort of otherwise mode of critical part of. No, I attended one session of Honorable Kasturi Rangan. He came to Pune in the year 2021 after Corona, of course, 21-22. And he delivered one session on national education policy, and he himself said this, that the present generation is completely not aware with this numeracy part of education, because we are so much so well acquainted, familiar, seasoned with computer, calculator, and now because of this AI and chat GPT, we are almost lost our memory. National education policy has emphasized this foundational literacy and numeracy. Without numeracy, took the example of our elders, those who are at the age of, right now they are at the age of 80, 85, 90, for example, they know all these terms. But if you ask this term even to a teacher of mathematics, with due respect and with few exception, I'm not criticizing to any mathematics teacher, sorry. Otherwise, some of the teachers, those who are present here, they may have some otherwise objection about. But very few teachers I know, because this is my 34th year of teaching experience. Mohammed sir said 30. It was that is not revised biodata. Now this is 34th year of my service, and not a single person I come across who know all this, who are present generation. Because very simple, because during our 10 plus 2 plus 3 structure, we have not learned this. And that is why it is specifically being mentioned to have analytical ability, critical ability, innovative ability. We must have such type of knowledge as far as numeracy part is concerned. Numeracy, for example, statistics. Nowadays, but those who are in social, belongs to social science, you have heard the term SPSS, statistical package for social science. To test the hypothesis, Z test, T test, ANOVA test, YAW test, whatever. The base is foundational literacy and numeracy. But 10% sample, population, p-value, we are so much so have knowledge about all this, but lacking behind of this numeracy part of. मी माझ्या वर्गामध्ये माझ्या मुलांना सांगतो on the first day of my academic year, June, that I will conclude my semester by the end of November. I will take Viva, and during that Viva, I will ask table, for example, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 30. I will ask table, and I will ask this Pauki, Nimki to any student. You have to answer. And literally, students tried their level best. This is, see, no doubt whether it is under compulsion. Some of you may ask me the question, sir, whether it is compulsory as per the section so and so, subsection so and so, act, statute, ordinance, rules, regulation, GR, notice. No, sorry. No GR, no notice, no circular, no act, no statute, no ordinance, no provision, no compulsion. But we as a teacher in higher education, if we want to really emphasize on the quality of student as far as his academic quality is concerned, we must make such type of experiment, and it will definitely improve his ability. It will definitely improve his different abilities, communication ability, etc. So this is second principle. Coming to the next, flexibility.
which is the third principle in national, because I have to cover 17 principles in a period of half an hour. Now I will conclude my session by 4. Flexibility. So flexibility is the next principle of national education policy. Flexibility by way of different programs. Flexibility by way of teaching learning techniques. Nowadays, the term teaching pedagogy, we use this term teaching pedagogy. What are the teaching pedagogies we are using? छान छान बोलतो, polished बोलतो आपण. We are very much polished. We are very much articulate in making our sessions. What is the teaching pedagogy you are using? The basic teaching pedagogy. Of course, I am not against. In my college, BMCC, we purchased, that is e-board, in every classroom, and the price of every e-board is almost 2 lakh plus. And so that is why I am not against to use this e-board, smart board. In our college, in our classroom, we use this smart board, no doubt. But in adopting or purchasing smart board doesn't mean that you are in tune with modern technology. You are in tune with present generation. What is required? You be a flexible enough as per the need, as per the requirement, as per the expectation, as per the demand of every student. So what is, because he's at the central point of our education, because he's in a marketing terminology, he's our customer. So you must satisfy what is his requirement. So that is why you must be flexible enough in your teaching learning techniques. It may be smart, it may be e-board, it may be whatever. So flexibility to the so that learners have the ability. What is the sentence used in national education policy? Flexibility so that learners have the ability to choose their learning programs and thereby choose their own path in life according to their talents and interest. This is the sentence used in national education policy as far as flexibility is concerned. So you must provide an opportunity, you must provide an option, you must provide a platform to the students so that accordingly he may opt, which is he find best suitable. Next is no hard separation between arts and science, between their curricular and extracurricular activities. No hard separation, because nowadays BCom, BA, BAc, it was that. Of course, I'm not criticizing because I am also part of BCom. I did BCom, I did MCom, I did MPhil, I did PhD from commerce itself. So I don't have any type of critical comment on this BCom or MCom, though it has value. No doubt it has value. Still, it has a value. Even though after NEP, it has a value. But there is no any hard and fast, that is watertight compartment should not be there. And that is why that is multidisciplinary and holistic education is the next one. Please do not restrict only with commerce. No doubt I am BCom, no doubt I am MCom, no doubt I did MPhil in commerce, but there should not be any watertight compartment or hard and fast rule as such. There should be what is called as a multidisciplinary and a holistic education across the science and social science and arts and humanities and sports as far as. So, for example, I am commerce teacher, I am commerce student. I want to, as all of you are aware, I want to learn music. So, allowed 2 credits for music. I am expert in say flute, or I am expert in harmonium, I am expert in guitar. Expert means I want to, not expert. I want to learn guitar. I want to learn harmonium. I want to learn tabla. I want to learn flute, whatever. 2 credits you may allowed in that faculty or that stream of knowledge. Your basic knowledge remain commerce itself, no doubt, because you want to become a CA or CS or whatever. But over and above, if you want to learn any art, there are 64 arts. Dancing, because I want to learn dancing, Kathak or whatever. So 1 credit, 2 credit course you have to, as all of you are aware with the academic bank of credit, and there is no need to explain that because this is 2025 and all of us we are familiar with all these ABC and all that. So multidisciplinary and holistic education is one of the peculiar feature of our principle of this national education policy.
not to restrict only with arts or commerce or science or humanities. Commerce student can learn music. Science students need to know the knowledge of finance, because nowadays what is the biggest problem everywhere is the financial literacy. We are so much so we are illiterate. We are so much so aware with the computer. We are so much so aware with this digital literacy. But many people, they are not at all aware with the financial literacy. For example, science teacher, science student, engineering student, they are good in their domain knowledge. They are good in their basics, but they are lagging behind with their financial literacy. So that is why such type of multidisciplinary approach and attitude is required, and it is mentioned. There is no need. What is the point I am repeating at this platform in front of my dear colleagues? That though it is being converted into GR or notice or act or statute or ordinance or whatever, you as a teacher will guide the student as per his capacity and capability. That yes, you want to learn music, please join this. You want to learn this, please join this. So that way automatically he will get a knowledge about this multidisciplinary and holistic education at the end, which is the object of this national education policy. Next is what I said in the beginning. Again I repeat, in that foundational literacy I mentioned, again I repeat the same: emphasize on conceptual understanding rather than rote learning and learning for exams. Nowadays, no need to criticize or no need to make any comment on this point, but majority of the higher education institutes, if your education institute is exception, I will salute. But majority of the higher education institutions all over the country, irrespective of national level institution also, majority of them, they are the centers of admission and examination. I repeat the sentence, they are the centers of admission and examination. In between where students, we have to search. We have to search. They come to for admission, again they come for examination. Why it happens? Because because in a way reverse engineering conceptual understanding. For example, I am teaching commerce. Salary paid to Mr. A. What the entry you will pass? Then there are two answers: salary account debit to cash or Mr. A account debit to cash. Unless and until that person know basic concept of personal account, real account, nominal account, then he will not answer correctly. As a teacher, I repeat my comment and sentence again. As a teacher, it is our responsibility to have a conceptual clarity of every concept. If student fail, or if student's perception is this, that in the classroom I am not having any type of conceptual clarity and understanding, then he will remain absent and he will directly appear for exam itself. So emphasize on conceptual understanding is very important, and that is why the problem of absentee may decline. Of course, this is not my comment that students only remain absent only for this, but the problem of absentee may decline if we conceptually explain any term to him. What is commerce? What is trade? What is, as I am in commerce, that's why I am explaining this. You belongs to every faculty, your own domain knowledge. You may made it accordingly. So emphasize on conceptual understanding rather than routine part of. Next principle, creativity and critical thinking to encourage logical decision making and innovation. Friends, again, you link with this numeracy part of. If he is capable enough of numerical part of, then definitely his critical ability, his creativity, innovation will definitely get increased. For example, it is said that higher education structure is based on TREE policy, TREE, TREE policy: teaching, research, extension, expansion. Teaching, research, extension, expansion. Friends,
we as a teacher, as I am not NSS program officer of my college, but I did that job long back. Through NSS, through NCC, through sports, through culture, through number of extension expansion activities which are available at our college, we can definitely enhance the critical and creative and logical and innovative practice among the students. For example, if he is interested in culture, if he is interested in sports, if he is interested in NSS, number of choices and options are available. It changes from institute to institute, university to university. So we as a teacher, we want to emphasize, we want to focus on his critical creative thinking through different programs which are available at our college. But friends, my workload is 20 hours. My timetable is this much. Once I delivered the session, I will not responsible for any, then it is very difficult to have that type of creative and critical and innovative thinking among the students. If we restricted only with a timetable and classroom and all that, you as a teacher must participate in NSS, must participate, though it is required or not. You may say that I am not a program officer and I'm not, but delivering one session at NSS program, NSS winter program, whatever. Because ultimate, at the end of the day, as Mohammad Rafi said in the beginning, at the end of the day, what is required, we have to have enhance the critical and creative and innovative thinking among the students through different activities and programs and sessions and lectures and workshops, etc., in our institute, though it is compulsory or not. Since beginning, I am trying to emphasize on one point. Though Maharashtra government or central government or your respective university had made it formal through GR or through circular or through act or through statute or through ordinance, if we decide and plan at our individual level, one can easily make it. For example, through NSS, through NCC, through cultural, through sports, you have to spend extra 1 hour extra. I am not making the point that where 24/7 you should be in college. No, sorry, but 1 hour extra, if you ready to wait in the college over and above, then definitely you can do this. Then next is ethics and human and constitutional values like respect for others, cleanliness, courtesy, domestic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty. All these points one can easily cover, not in any orientation program, not in any seminar or webinar, because seminars and webinars only for certificate and improving our API for promotion 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, table 14, finish. But if we want to really enhance that constitutional values and other points, as I said in the beginning, I means it is mentioned in NEP itself: cleanliness, courtesy, domestic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, pluralism, equality, and justice. Through different programs and activities, we have to plan in the college. Friends, you may ask me the question, sir, it is mandatory, it is compulsory, it is under which statute, it is under which act? कायद्यामध्ये असं म्हणतात, आय रिपीट इन मराठी आणि इन इंग्लिश, जेव्हा एकमेकांवरचा विश्वास संपतो त्यावेळेस कायदा तयार होतो. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट्स लॉ. There is no need to have circulars and GR. We as a teacher, we decided, we planned to have a overall personality of the student by participating in the programs and activities of the college through these extension and expansion activities. One can easily do it over and above our teaching learning process. So ethics and human and constitutional values like respect for others and all and all and all and all. Next point. Promoting multilingualism and the power of language. Multilingualism. As I am teaching to commerce students, commerce is a business language is probably English. So I have to teach in English. I have to taught in English. I also learn in English. But as I'm in Maharashtra,
So I need to have the Marathi. नाही नाही मी इंग्रजीच बोलणार, मराठी बोलणार नाही असं चालणार नाही. I have to Hindi. For example, nowadays there is a so much particularly since last week we heard about this South states and all and all and all. I don't want to make comment on any of this. But multilingualism, promoting multilingualism is very much required. Different languages, Rashtrabhasha, Matrubhasha, and subject knowledge. As I am commerce, so English is must. As I am in Marathi, Maharashtra, so Marathi, Hindi. For example, my mother tongue is Tamil, so I have to use Tamil. एक भारतीय भाषा येणं आवश्यक आहे. Indian language, either Kannada or Tamil or any Telugu, you have to have Gujarati, one Indian language over and above English, over and above mother tongue. माझं मराठी जर आहे तर मला मराठी यायला पाहिजे. हिंदी राष्ट्रभाषा आहे तर हिंदी यायला पाहिजे आणि एक अन्य भारतीय भाषा यायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल तमिळ, फॉर एक्झाम्पल गुजराती. फॉर मराठी or Hindi, Gujarati is that way convenient. Sindhi, at least we understood. So language should not be the barrier. Nowadays what is happening that it's a barrier. It should not be the barrier. म्हणजे जो इंग्रजीमध्ये बोलतो तो हुशार. Who is a intellectual who speaks in English, polished English, articulate English, good pronunciation. And those who are in Marathi or those who are in local language, they don't have any type of quality. This is not correct. No doubt English is respectable language, English is required language. I always took the example that the number of alphabets in English only 26, 21 plus 5, A, E, I, O, U, Swar and Manjan. And in Marathi, this is 52. I repeat, 52. Number of alphabets in Marathi, 52. If I am not wrong, in Hindi, 53. मेरी हिंदी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी भी 53 अल्फाबेट्स है, अद्याक्षरम जिसको कहते हैं. Point is, language is it should be a knowledge, that is a way of communication. It should not be the barrier of delivering the knowledge. So promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning. Next, life skills such as communication, cooperation, teamwork, and so you have to teach life skills in. For that purpose, you need to follow this. You must be good in your communication. आपलीच जर communication चांगलं नसेल, then how we will set an example in front of the student? Cooperation. If you are not cooperative enough, then how you say that you should be cooperative? Because this is the mathematics, 2 plus 2 is equal to 4. So if you yourself not put a clear example, how you expect that other will follow you? And that is why communication, cooperation, teamwork, you must work in team. You should not work alone, because this is not the college. This is not only you appointed by the management to teach in the college. There are a number of other teachers also, other colleagues also, other friends also, other staff also, non-teaching staff also. Along with you, they have to work. My API is 1000 plus, my API 2000 plus. It is of no use that how much API you have. It may be 3000 plus or 4000 plus. API is not a concern of your academic personality. What is required? You must work in team. That team spirit, teamwork, working in group is very important. Otherwise, it is of no use. I am table 14 teacher. What is the use of the table 14 teacher if you are aloof in the college? You are not concerned with anyone in the college. That is why. Next, focus on regular formative assessment for learning. I repeat the sentence. Focus on regular formative assessment for learning rather than the summative assessment that encourages today's coaching culture. Today's coaching culture, specific sentence is being used in this NEP, that there are tie-up colleges in Pune also. I don't know what about in your states, university, but in Pune we have tie-up colleges. Tie-up means coaching classes are associated with any particular college. Students used to attend that coaching class and they are not at all turned to the college. This is the reality. It is being mentioned in policy document also.
And that is why you have to change it by formative, regular, formative assessment, not examination. Hereafter, we don't have to examine the student, we have to assess the student. There is a basic difference between assessment and examination. Through regular formative assessment, every week, every fortnight, every month, through different mode, group discussion, presentation, meeting, seminar, different field visit, on the job training, number of choices and options are available. But it should be regular formative assessment for learning rather than only one time exam. As I said in the beginning, centers of admission and centers of examination. Now, hereafter, unless and until you focus on regular formative, though it has some limit, I know. Definitely, some people will ask me the question about, sir, about remuneration, honorarium, of evaluation, of assessment, of examination. It has issues. I don't know. I am not the authority also to answer this, and I am not at all that way focused. Right now, I am focusing my point that unless and until there is a regular formative assessment of the student, the attendance will not improve. He will not change himself. Otherwise, it remains only a center of admission and examination. Next point, extensive use of technology. And this is the word itself mentioned in NEP, so I am helpless. Extensive use of technology in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for Divyanga students, and educational planning and management. Excessive use of technology. Of course, this is the word used here, NEP, but 2 days before only, I go through with one news that Swedish government, now they discarded that smart board in the class and chalk and talk, that is pencil, book, notebook policy, again they adopted. Of course, I'm not against to use the technology. Right now also I am in front of you through this e mode, through this electronic mode, or through this modus operandi, or the online mode. So it has no any option otherwise. But and it is being mentioned extensive use of technology in teaching and learning and removing language barriers. This is important what I feel in person. Language should not be the barrier for. It should not be the part of our teaching learning. Otherwise, I am Marathi, I am Kannada, I am that. So sorry. This is just for getting the knowledge and having conceptual foundational literacy. Otherwise, it is of no use. Next, full equality. Sorry, I forget one principle in between. Respect for diversity and respect for the local context. As in the beginning, Dr. Patil sir, coordinator of this course, he mentioned that we must respect for the local context. For example, I am teaching costing in Pune in my college. As my college is autonomous, since last 4 years, my college is autonomous. So, while framing the syllabus of my subject, I needed to consider the need and requirement of the students, those who are in Pune and their near vicinity requirement. The same is applicable in your college. For example, your college is autonomous. Even if it is not autonomous, if you are a member of board of studies of your university, you can do it. But this is the particular flexibility available to the non-autonomous colleges. If you are autonomous and if your college is at remote place, at rural area, then what is the need and requirement and situation and atmosphere and environment of your college? You have to consider, you have to have considered that need and that requirement and that environment and that situation, and accordingly you may revise the syllabus. Otherwise, what is happening? We taught history, we taught such knowledge. What is happening in America? What is happening in Germany? What is happening in Japan? Without knowing our own state, our own district, our own city, our own college. Many times, friends, it is my own example, I may be wrong. For example, I am associated with Pune University, Savitribai Phule Pune University. Just as an experiment, I asked many times to a teacher or student while taking the interview, what is the trade name? In commerce, we used to call trade name. Actually, it is Bodh Vakya.
of Pune University. For example, the Bodhavakya of Pune University, trade name of Pune University is Yah Kriyavan Sapanditah. Yah Kriyavan Sapanditah. This is the trade name of Savitribai Phule Pune University. Friends, 60% students, though they graduate and double graduate and PhD from Pune University, they don't know the trade name of Bodhavakya of Pune University. Yah Kriyavan Sapanditah. But I am the degree holder of Pune University without knowing the trade name. That is why local context, local part of you need to consider as far as every organization has its own trade name. As we have our own vision and mission. आपल्याला आपलं vision माहिती असतं. You have, you know, your vision and mission for NAC to display it on the notice board. What is our vision and what is your mission and what is your action and what is your plan and what is your policy and etc. without knowing the basics. And that is why respect for diversity and respect for the local context in curriculum, pedagogy, policy, always you need to keep it in mind. This is the sentence used in national education policy. You need to respect diversity, no doubt. You need to learn number of diverse things, but focused on local context. Do not forget the local context. If you forget the local context, it is of no use. This is the what is the called the beauty of national education policy. Next is full equity and inclusion. Full equity and inclusion as the cornerstone of all educational decision to ensure that all students are able to thrive in the education system. Samarasata, what we used to call equity and inclusion through our different programs, through our different activities, through our different exam system, assessment system, etc. Next, teachers, as time is very limited, by 2 minutes I will finish. Teachers and faculty as the heart of the learning process. Their recruitment, continuous professional development, that is why you are here. Why you are here? Because university and central government and college are taking care that there should be a continuous professional development through FDP and all and all and all. Positive working environment and service conditions. So teachers and faculty as the heart of the learning process. What is the word used? Is heart of the learning process. So much so importance is given to our faculty, our member, because there are 4 members in education fraternity, that is management, principal, teacher and student. So we are a teacher. So we are the heart of the learning process. This is the word used in national education policy. There is a tremendous importance. No doubt, we have a problem of recruitment, we have a problem of appointment and salary and grant and non-grant. That point is different. I'm not against, or I'm not making comment that these are not the problems. Problems are there. But what is the word used in sentence used in this? That teachers are the heart of the learning process. Next is light but tight regulatory framework. Next is outstanding research. Now I'm moving fast because time is very limited. Outstanding research as a, because see, National Research Foundation, NRF, it is being mentioned in NEP, and 20,000 crores not yet sanctioned, but at least planned that every year government will give it, but only for outstanding research and continuous review. The word is used, continuous review of progress based on sustained research and regular assessment by educational experts. And that is why 6 monthly progress report presentation and all and all and all that activities we are using. Then rootedness and pride in India. मैं भारत का नागरिक, स्व का अभिमान, my history, my swabhasha, swabhusha, swabhavan, swabhojan, all these, we must be pride in India. मैं ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना भाग्य का लक्षण है, और उसमें भी भारत में मनुष्य का जन्म मिलना ये बहुत ही भाग्य का लक्षण है. तो ऑल ऑफ वी आर इन अ पार्ट ऑफ इंडिया. हम मनुष्य है और भारत में जन्मे हैं, तो वी आर दैट वे वेरी लकी. सो भारत में ऐसा क्या है? व्हाट इज द प्राइड इन इंडिया? What is our rich and diverse and ancient and modern culture? We must transfer it through this IKS. We use the term IKS, na, Indian Knowledge System. That भारत की क्या विशेषता है?
भारत की क्या वैशिष्ट्य है ये हमें बताना है. Pride in India. This is the principle. As time is very limited, otherwise next time I will explain in detail. For example, then education is a public service. Access to quality education must be considered a basic right of every child. Remember the word 1,000 times. Education is a public service. It is not a private service, public service. Access to quality education must be considered. The word must is used, not may. Must be considered a basic right of every child. It is a right. It is not a discretion. It is a right of every child to get a quality education. And the last, substantial investment in strong, vibrant public education system, as well as the encouragement and facilitation. Remember the next sentence, true philanthropic private and community participation. And now you realize that why central government is declining its role in higher education as far as grants are concerned. Philanthropic private and community participation is encouraged in this national education policy. Though it has pros and cons, I don't want to make any only positive or only negative comment on this. So these are the different principles mentioned in national education policy. I am coming to the same conclusion what I said in the beginning, that friends, though it is being not being converted directly into GR and circular and ordinance and act and statute and notice and order by principal or by vice chancellor or by minister or whatever, we as a teacher, if we planned, if we decide in its real sense, then definitely from principle number one, not to last, because some principles are not within our capacity. We are not that way very directly responsible, but at least 70-80% of these principles, we can put it in practice, implement it. Then we can really make us comment that yes, at our own level, we are there to implement NEP, which was announced in the year 2020 on 29th of July. Now we are in 17th of March 25. We will definitely in a position to make a comment. Yes, at my own level as a teacher, at my college, at my class, at my university, at my autonomous or whatever college, I am trying my level best. I have tried, or I am trying rather, my level best to put it in practice. So, thank you for attendance. Sorry for, because in the beginning I said that at the end the number will be 85, but now it is 9091. So all of you have at least attended and maybe listen carefully. And I am also a part of you only. I am just got an opportunity, and that's why I'm on this side. I also attended so many times such programs, FDP and all that. But in person, I'm not in favor of online mode of session. Offline mode is a different value and importance. But okay, again, I express thanks to my there is organizer, Dr. Mohammad Rafi sir, and my senior colleague, Dr. Patil sir. They gave me an opportunity to interact with you. Thank you. Rafi sir, my job is over. I'm done. So thank you, sir, for your valuable inputs you have given in this first lecture of our NEP orientation and sensitization course through your vast experience in the field of higher education. So my special thanks to Prashant Sathe, sir, for sparing his valuable time and setting the tone of this event through his inaugural address as well as this technical session. So with the permission of our respected resource person, I declare that this session is over and immediately we will start the second session. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I will leave. So we have another resource person who have joined this cloud meeting. Dr. Anurag Deshpande, sir, is here. So on behalf of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Chhatrapati Sambhajinagar, I welcome him. He is project coordinator, Jagadguru Shri Devnath Institute of Vedic Science and Research, Nagpur. So indeed, it is really a pleasure and honor for all of us to have him here as a resource person. So I welcome you, sir, Dr. Anurag ji, and I would now hand over the session to Anurag Deshpande, sir. Over to you, sir.
थैंक यू। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन का दूसरा सत्र जो भारतीय ज्ञान परंपरा पे है, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए, ऐसा बताया हुआ है। इसलिए आ, हमारा जो सत्र रहेगा ये हिंदी और इंग्लिश ऐसा मिक्स इसमें रहेगा। तो बहुत ज्यादा समय ना आ, गवाते हुए आ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पे उन्होंने आमंत्रित किया, और हम सब आपके साथ मिलकर हम एक भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय पर कुछ बातचीत करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का एक बहुत बड़ा योगदान आ, आने वाला ये जो एनईपी 2020 का जो पूरा सत्र चल रहा है इसमें है। बहुत बार ऐसा होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कहने के बाद कुछ प्रश्न आते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो चांद पे जा रहे हैं, तो फिर भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या आवश्यकता है। मतलब एक अवधारणा ऐसी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात करना मतलब पीछे जाना है, आगे जाना नहीं है। दूसरा एक है कि कुछ लोग पूछते हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने पूछा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर बात करना या उसमें उसको लागू करना, इसका मतलब वो जो पेन था, वो पुराने जमाने का पेन जो इंक में डुबो के अभी वो हम शुरू करने वाले हैं क्या। तो ऐसा भी एक बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। सब कुछ ही देखेंगे। तो पहले देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों है, कहाँ से आई, और उसका उसकी परिभाषा क्या है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक। जी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा। तो जी, भारतीय ज्ञान परंपरा के जब बारे में बात करते हैं तो एक ऐसी परिभाषा आती है कि एक लंबी परिभाषा जो मुझे अच्छी लगी, जो हर जगह से हमें मिलती है, वो है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से भारतीय द्वारा निर्मित एवं अर्जित किया गया समृद्ध पारंपरिक विज्ञान। इन द इंडियन संस्कृति, the Indians which have created and acquired the knowledge from the olden times, which is the prosperous traditional विज्ञान। तो अब इसको मैंने जब इंग्लिश में पढ़ा तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने वैसे ही रखे। उसका अर्थ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे। तो ये एक जनरल परिभाषा आती है कि अ, ऐसी कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा की परिभाषा है। एक एक शब्द को देखते हैं तो हमें पता चलेगा, इसमें मैं थोड़ा ज्यादा समय दूंगा। भारतीय, सबसे पहला शब्द है भारतीय। भारतीय कौन है? जिसने भी इस भारत की भूमि में जन्म लिया वो भारतीय है। फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी का भी कैसा भी हो, लेकिन वो भारत के देश का नागरिक है। और जब भी हम भारतीय कहते हैं या भारत कहते हैं तो उसमें कि केवल और केवल दो ही रिलेशंस आ सकते हैं। एक, वो हमारा, ये हमारा देश, और हम इसके सुपुत्र। बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए हम सब भारतीय, जो हम भारत के भूमि में जिसने जन्म लिया है वो सब भारतीय है। अब ये भारतीयता हम कहीं पे भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर वो भारत की भूमि में जन्म तो लेते हैं, लेकिन फिर विश्व में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय है? तो हाँ, वो भारतीय है, क्योंकि वो डीएनए से भारतीय है, वो विचारधारा से भारतीय है, और एक पद्धत रहती है जो भारत को देख के ही समझ में आता है कि ये भारतीय है। इसमें मैं ज्यादा चाहूंगा नहीं। तो ये भारतीय हम ज्योग्राफिकली देखते हैं तो भारतीय उसको कहते हैं। दूसरा शब्द है संस्कृति। अब अगर मैं आपको पूछूं संस्कृति मतलब क्या, तो इंग्लिश में आप कहेंगे कल्चर। कल्चर और संस्कृति डिफरेंट है, कैसे मैं बताता हूँ। कल्चर जो शब्द है, कल्चर शब्द ये कल्ट इस शब्द से आया हुआ है। कल्ट, आपको पता है कल्ट मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन गोल।
तो कल्ट एक इंटरेस्ट का पार्ट है, और कल्चर की परिभाषा ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन गोल्स एंड आल्सो हैविंग कॉमन लीडर। अगर लीडर बदलता है, इंटरेस्ट बदलता है, तो कल्चर बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1970s में अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पहनते थे, उसके बाद धीरे धीरे कल्चर बदल गया और नैरो बॉटम का जमाना आ गया। तो कल्चर हमेशा बदलता है, ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। संस्कृति की परिभाषा अगर हम देखें, तो व्हाट इज संस्कृति? संस्कृति का सबसे पहला जो शब्द आता है सम, वो धातु जो है वो कहता है सम सम सततम, जो कंसिस्टेंट है, जो कभी बदल नहीं सकता। तो बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है कि कल्चर हमेशा बदलता है, संस्कृति कभी बदल नहीं सकती। संस्कृति की और एक परिभाषा शास्त्रों में कही है कि सम्यक कृति इति संस्कृति। सम्यक मतलब अप्रोप्रिएट, कृति मतलब एक्शन। जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है, जहां पे भी जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन हो रही है, वो है संस्कृति। अब कैसे पता चलेगा? अब सोसाइटी में तो कहीं रूल्स लिखे नहीं है, ऐसा कभी लिखा नहीं होता है कि कभी कोई बुजुर्ग गिर जाए तो उसको उठाओ। ये किसी को देख के हम, या कोई रूल कहीं बोर्ड पे लिखा नहीं है कि अगर कभी कोई कि ऐसे कोई बुजुर्ग नीचे गिर जाता है रास्ते पे तो उसको उठाना चाहिए। ये अनसेड रूल है। यही ये संस्कृति का एक अविभाज्य घटक है, जो हमें ये अंदर से प्रेरित करता है कि उसको जाके उठाए। तो वो जो कृति है, वो अप्रोप्रिएट एक्शन जिसे हम कहते हैं, वो है संस्कृति। संस्कृति के विपरीत जो भी होता है वो है विकृति, जो संस्कृति के सब कुछ अपोजिट करते हैं। टेररिज्म विकृति है, जो संस्कृति को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते। कोई भी जो ऐसे काम हो रहे हैं जो संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, वो विकृति है। तो ये हो गया एक डेफिनेशन जिसे हम कल्चर नहीं कह सकते। इसलिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो नॉन ट्रांसलेटेबल है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में कुछ ऐसे शब्द है जो ब्रिटिश लोगों को समझे ही नहीं, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाव ही अलग है। तो संस्कृति, ये एक शब्द है। इसी से रिलेटेड और एक शब्द है, वो है संस्कार। अब हम कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है वो संस्कारित है, या इसके माता पिता ने इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए शायद, ऐसे हम कभी कभी कहते हैं। तो संस्कार मतलब क्या? फिर से, सम्यक कारयति संस्कार। जो भी हम अप्रोप्रिएट एक्शंस, जो संस्कृति के बढ़ावा देने के लिए जो भी हम किसी बच्चे को देंगे या किसी को भी देंगे जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, वो है संस्कार। इसलिए संस्कार और संस्कृति ये एक जैसे शब्द, जो एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके घूमते हैं या चलते हैं। अब बीच में एक शब्द और आता है जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, वो है संस्कृत। अब आप कहेंगे संस्कृत तो भाषा है। भाषा तो प्राकृत थी, जो प्रकृति से आई हुई भाषा थी वो प्राकृत थी। लेकिन इसी फ्रेमवर्क में जब बाउंड्रीज में उसको बिठाने की कोशिश की, तो वो संस्कार को संस्कृति से जोड़ने वाली जो भाषा है, वो है संस्कृत। वो बन गई संस्कृत। तो इसलिए आप देखेंगे ना, संस्कृत भाषा में आप कोई किसी को गाली गलौज नहीं कर सकता है, कोई किसी को गलत नहीं कह सकता है। इनफैक्ट संस्कृत तो, अभी अभी एक पेपर भी आया हुआ है, पब्लिश हुआ हुआ है, कि डायस्लेक्सिया जिसको भी होता है, जो आपको पता होगा ना, जो उल्टा एफ लिखते हैं या उल्टा बी लिखते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि लिखना कैसे है, वो क्योर करने के लिए संस्कृत भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली वो प्रूव करते हैं कि ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, इन दोनों का चालन संस्कृत भाषा से होता है। इसलिए हम जब बात करते हैं, कोई भी संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, तो वो उसके उच्चारण के कारण हमारे दोनों ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, ऐसे कहते हैं। तो उसमें मैं ज्यादा चाहूंगा नहीं। संस्कार, संस्कृत और संस्कृति, ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा हमें दिखेंगे। फिर क्या हुआ भारतीय संस्कृति में? ऐसा क्या हुआ जो हम बात कर रहे हैं? तो हम जाते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में ऐसा क्या हुआ? तो प्राचीन काल का हमारा एक इतिहास है। भारत पर कम ज्यादा 1200 आक्रमण हुए, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। अब 1200 आक्रमण के बावजूद आज भारत अच्छी स्थिति में हमें दिखता है। कैसे पता चलता है? हमारे घर पर हम, हमारे पिताजी को पता, हम हमारे पिताजी पता है, उनके पिताजी पता है, उनके पिताजी पता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारा वंश वृक्ष है, हमारे घर पे है, पूरी एक वंश वृक्ष, जो कितने तो भी साल से हमारे घर पे, हमारे घर के जो पुरुष है वो तब से आए हुए हैं। मतलब हमारी जो एक जो हमारी जो वंश परंपरा है वो बहुत बड़ी है। तो
अगर ये 1200 आक्रमणों के बाद हम इतने अच्छे स्थिति में रह सकते हैं, तो हमारे ही जनरेशन के सामने आज अफगानिस्तान, एक एक इन्वेजन उस पे हुआ, एक अटैक हुआ और अफगानिस्तान निस्तानाबूत हो गया। हमने देखा है कि हमारे ही जनरेशन ने देखा है कि एक अटैक होने के बाद अगर कोई मुल्क खत्म हो जाता है, लेकिन भारत पर अगर इतने सारे आक्रमणों के बाद भी आज भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। क्या कारण हो सकता है? तो भारत के पास एक शक्ति है जिसका नाम है सज्जन शक्ति। सत इति सत्य, जन इति जनः। सत्य के आधार पर जिन महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे सब, ऐसे कौन कौन है? तो एक लंबी लिस्ट आती है। एक लिस्ट आती है जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, वो है भारत के क्रांतिकारक, जिनकी वजह से, जिनके बलिदानों की वजह से आज भारत इतने अच्छे स्थिति में हमें दिखता है, जिनकी वजह से हमें ब्रिटिशों से, जो ये जो गुलामगिरी थी, उनसे हम मुक्त हो गए। एक और दूसरा जो लिस्ट है वो आती है भारत के वैज्ञानिक। और कितने सारे ऐसे वैज्ञानिक थे भारत के, जो आचार्य चाणक्य, आचार्य चंद्रगुप्त, आचार्य वराहमिहिर, आचार्य नागार्जुन, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, ऐसे करते करते अब तक आचार्य में ही मैं कहूंगा उनको, आचार्य अब्दुल कलाम जी, जिनकी वजह से आज हम इतने बड़े जो न्यूक्लियर पावर हम बन गए हैं, वो नहीं रहते तो मुझे नहीं लगता कि हम न्यूक्लियर पावर बनते। तो इतने अलग अलग पद्धति से जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिकों की वजह से आज भारत इतनी अच्छी स्थिति में हमें दिखता है। अब इन्होंने जो भी किया, ये कभी हमारे कोर्स में आया ही नहीं, कभी मेन स्ट्रीम में आया ही नहीं। कभी 10th में हमने पढ़ा ही नहीं कि आचार्य सुश्रुत ने क्या ऐसा किया हुआ है। कभी 12th में हमने पढ़ा ही नहीं कि ऐसी कौन सी फिजिक्स के बारे में, वैशेषिक दर्शन में जो आचार्य कणाद कहते हैं, वो कहाँ से आता है और क्यों हम उनको, हमको फिजिक्स में उसका उल्लेख नहीं था। ये हमको कभी कभी किसी ने बताया नहीं। मैं हर जगह आचार्य इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग भी जो हमारे सामने बैठे हैं वो आचार्य ही है। आचार्य की परिभाषा शास्त्रों ने कही है, आचरति आचनोति थी आचार्य। जिसके आचरण की वजह से आगे वाला जो भी पुरुष है, जो आगे वाला जो व्यक्ति है, उसका आचरण, उसके आचरण में परिवर्तन हो जाए और वो एक उत्तम मनुष्य इस नाते अगर इस धरती पे काम करे, तो उसे कहते हैं आचार्य। जो मतलब वो तो आचार होता है, लेकिन जो भी पढ़ाता है वो है आचार्य। इसलिए आप केवल शिक्षक नहीं है, हम सब यहाँ बैठे जो है, हम आचार्य है। इसलिए ये लोग भी आचार्य इस नाते ही, वैज्ञानिक इस नाते इसमें कि उन्होंने काम किया। तो इन इस प्राचीन काल में भारतीयों द्वारा निर्मित और अर्जित किया गया, ये तो इन्होंने निर्मित भी किया, अर्जित भी किया। समृद्ध, वो तो है ही क्योंकि वो प्रॉस्परस है। पारंपरिक, क्योंकि ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब जो कभी खंडित नहीं हुआ, जो बहुत ही लंबे अरसे से चलते आ रहा है, पारंपरिक। और लास्ट में लिखा है विज्ञान। केवल ज्ञान नहीं कहा, तो विज्ञान है। विज्ञान मतलब, विज्ञान को अगर फिर से मैं पूछूं तो आप कहेंगे साइंस। साइंस माने शास्त्र होता है। शासना त्रयति इति शास्त्रम। मतलब आप ऐसा करो तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करो तो आपको ये कंपाउंड या ये केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे। फिजिक्स में आप ऐसे करो तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स से ये रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, ये शब्द को साइंस नहीं कह सकते। इनको समझ में नहीं आया कि विज्ञान को क्या कहना चाहिए। विज्ञान मतलब किसी भी चीज का विशेष ज्ञान जिसे हम कहते हैं। इसका एक उदाहरण लेता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। विज्ञान मतलब, एक 12वीं कक्षा खत्म होने के बाद एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे संगीत सीखना है। मैंने कहा ठीक है, कोई भी जो कॉलेज है जो सिखाता है उसके पास चले जाओ। वो एक कॉलेज में गया, उसने कहा कि मुझे संगीत सीखना है, तो बोले ठीक है, जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दो और एडमिशन ले लो। तो वो बोला कितना टाइम लगेगा मुझे, मैं कितने समय में संगीत सीख पाऊंगा? बोले 3 साल का कोर्स है, 3 साल में सीख जाओगे। तो वो फिर से मेरे पास आया, बोले 3 साल में सिखाने को कह रहे हैं, ऐसा ऐसा कॉलेज है। मैंने कहा वाराणसी में एक पारंपरिक पद्धति से, एक गुरुकुल पद्धति से एक संगीत वहां पे सिखाते हैं, वहां पे घराने अलग अलग प्रकार के होते हैं, वहां पे एक बार जाके पूछो। वो वहां गया, उसने कहा कि मुझे संगीत सीखना है। तो वो बोले बिल्कुल। वो बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने 12वीं डिग्री सब मार्कशीट वगैरह ये सब लाया हुआ है। तो बोले उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बोले फिर क्या चाहिए? तो बोले कुछ नहीं, आप बोरिया बिस्तर लेके यहाँ पे रहने आ जाओ। तो बोले कितने साल में सिखाओगे भाई? तो बोले पता नहीं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। बोले ऐसे क्या पढ़ाने वाले हो? तो बोले कुछ नहीं, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आसन प्राणायाम आदि सब करना पड़ेगा,
उसके बाद रियाज करना पड़ेगा, और फिर पूरी एक दिनचर्या बताई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी चीज को हम अपने जीवन से उसको जोड़ लेते हैं, उसे कहते हैं उस चीज का विज्ञान। तो जो हम दिनचर्या से जोड़ लेते हैं, जो हम हमारे जो सांस हम ले रहे हैं उसके साथ साथ हम वो कर रहे हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। मिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में ऐसे ट्रेनिंग देते हैं कि जो सोते हैं, अगर सिपाही जो है वो सोया हुआ है और अगर आवाज भी होता है, तो अपने आप उसकी जो हाथ है, उसका जो हाथ है ना, वो अपने गन के पास चले जाता है। अब ये ब्रेन में उसको इतना सिखाया हुआ है, तो वो उस चीज का उसको विज्ञान है। ज्ञान तो उसको मिल गया था तभी, लेकिन वो इतना अपने जीवन से उसने जोड़ लिया कि उसका विज्ञान उसको समझ गया। इसलिए समृद्ध पारंपरिक विज्ञान। अब आप कहेंगे कि इतना सारा तो हमारे पास है, तो उसमें है क्या क्या? तो भारतीय ज्ञान परंपरा को दो चीजों में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। पहला है सिस्टमेटाइज नॉलेज, जिसे हम डॉक्यूमेंटेड नॉलेज कहते हैं। और उसमें क्या क्या आता है? पांडुलिपियां, जो मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट आप लोगों ने देखी होगी, पाम लीव्स पे कुछ इंस्क्राइब्ड होता है, जो हम पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते वो बाद में देखेंगे। तो जो ये है मैन्युस्क्रिप्ट इसमें आते हैं। उसके बाद आता है हस्तशिल्प, शास्त्र, ऐसे जितना भी हमने डॉक्यूमेंटेड जो नॉलेज है, उसे कहते हैं सिस्टमेटाइज नॉलेज। और दूसरा है ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पारंपरिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जो है मौखिक परंपरा, जो ओरल ट्रेडिशंस में आता है। किसी भी गुरुकुल पद्धति से सीखने वाले गुरु और शिष्य, ये दोनों एक दूसरे से जब बात करते हैं, तो उसमें जो ज्ञान आदान प्रदान होता है, वो मौखिक परंपरा से चलता है। कोई भी आप गुरुकुल पद्धति से पढ़ने वाले लोग देख लीजिए, इसमें यही होता है। उसके बाद कथा के माध्यम से होता है। अलग अलग प्रकार की कथाएं पहले चलती थी, कथाओं के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता था। तो ये दो प्रकार के नॉलेज है जो भारतीय ज्ञान भंडार में यूज होते हैं। लेकिन इसमें नॉन ट्रांसलेटेबल्स का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे पहले हमने देखा कि संस्कृति मतलब कल्चर है क्या? तो नहीं है। हमने देखा क्योंकि उसमें फर्क है। एक है धर्म और रिलीजन। धर्म मतलब रिलीजन है क्या? रिलीजन एक रिलीजियस एक्टिविटी जो साथ में करते हैं, वो अगर कोई एक पर्टिकुलर साथ में करने वाले लोग हैं तो वो रिलीजन है। लेकिन धर्म ऐसा नहीं है। धर्म की परिभाषा महाभारत में दी हुई है कि धारणा धर्म मिथ्याहुर धर्मो धारयते प्रजा। जो धारण किया जाता है वो धर्म है, उसका किसी रिलीजन या किसी से संबंध नहीं है। अगर आप किसी के पिता है तो आपका पितृ धर्म है। अगर आप किसी की माता है तो आपका मातृ धर्म है। आप यहाँ पे बैठे हुए आचार्य है तो आपका आचार्य धर्म है। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका विद्यार्थी धर्म है। गाय का एक धर्म होता है कि वो अ, शाकाहारी ही खाएगी। शेर का अपना एक धर्म होता है, जो वो शाकाहारी खा ही नहीं सकता। तो ये जो एक गुण धर्म के हिसाब से जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है हर चीज का, उसको कहते हैं धर्म, जो धारण किया जाता है। अब हर एक चीज धर्म और जाति के इसमें हमने बांट दिया। और विद्या, जो भारतीय ज्ञान है, जो विद्या है, वो सर्वोपरि है। लेकिन वो उसमें धर्म और जाति के बीच में बांटने के कारण वो हमको पता ही नहीं चला। हमको लगा कि यही लोग जो बोल रहे हैं वही सही है, इसलिए ब्रिटिशों ने इसमें यही डालने की कोशिश की। तो संस्कृति मतलब कल्चर नहीं हो सकता, धर्म मतलब रिलीजन नहीं हो सकता, विज्ञान मतलब साइंस नहीं हो सकता, वो तो हमने अब भी देखा। और भाव मतलब इमोशंस नहीं हो सकता। इमोशंस मतलब भावना होता है या फीलिंग्स होते हैं। भाव मतलब हम हमारे भारत में एक भाव प्रागट्य होने का एक कारण है। हम अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी को कॉलेज में जाते हैं, तो तिरंगे को देखकर जो हमारे अंदर भाव प्रकट होता है, वो भाव हम किसी के सामने बता नहीं सकते। बहुत बार आपने देखा होगा, एक एक इसमें बहुत ज्यादा फेमस था क्रिकेट के, एक मैच थी जिसमें मोहम्मद सिराज जो थे, वो अचानक से रोने लग गए। जब पहले 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 जब मैच के पहले जब नेशनल एंथम होता है ना, वो जस्ट तिरंगे को उसने देखा और वो रोने लग गए। अब वो क्यों रोए, क्या रोए, ये फिर से कोई बात है नहीं। उनके अंदर जो भाव जागृति हुई, जो देश को देख के हुआ, वो केवल भावना नहीं थी, वो एक भाव था। जो फिर से वही कि ये सारे जितने भी हम ये सोच रहे हैं नॉन ट्रांसलेटेबल्स है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को सीखते हुए या सिखाते हुए बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते हमको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि नॉन ट्रांसलेटेबल्स बहुत है। तो ये तो मैंने बस एक उदाहरण के तौर पे चार दिए।
ऐसे बहुत सारे हैं, इस पे एक पूरा सेशन हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन डॉलर सिस्टम में अंदर जाने से पहले ये चीज समझना कि बहुत बार एग्जैगरेशन हर चीज में दिखते हैं। ऐसा होता है कि हर चीज में अ, ये आपके इंडियन डॉलर सिस्टम में हमें दिखा, अब उसका रेफरेंस है या नहीं, उसका प्रूफ है क्या नहीं, पता नहीं। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, इसका पब्लिश डेट है 27 मार्च 2020। आप सोच सकते हैं कि 27 मार्च 2020 को क्या था, लॉकडाउन हुआ था, पहला लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन के बीच ये न्यूज अगर आ सकती है, तो आपको, आपने कभी देखा नहीं। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बाल कांड से निकल रहा बाल, तो शिव पुराण में कोरोना का उल्लेख। अब शिव पुराण किसी ने पढ़ी है? हम नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता है, मुझे पता है किसी को नहीं पता, क्योंकि ना हमको 10th में थी ना 12th में थी। ये तो हम कहते हैं कि शिव महापुराण या शिव पुराण तो किसी रिलीजियस इसका है, तो जो भी है, लेकिन शिव महापुराण में कोरोना का उल्लेख नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने क्लियर किया है। तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं या क्यों बता रहे हैं कि जो बातें नहीं है वो अगर हम बताने लग गए, तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जब हम कोई विद्यार्थी पढ़ेगा या वो अगर पढ़ने बैठेगा, तो उसको ये समझना तो चाहिए कि ये कहाँ है। और अगर है तो इन्होंने देना चाहिए था कि शिव महापुराण के ये चैप्टर के यहाँ पे इस श्लोक में ऐसा ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसे बातें ना फैलाए। क्या नहीं करना चाहिए पहले मैं बता रहा हूँ, फिर भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है वो बताऊंगा। ये और एक उदाहरण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर जहां पे भी मैं कॉलेज में जा रहा हूँ ऐसे पोस्टर्स मुझे दिखते हैं, क्योंकि ये गूगल से निकला है। गूगल व्हाट्सएप, ये जो गूगल व्हाट्सएप, ये जो यूनिवर्सिटी आजकल बन रही है ना, ये ऐसे प्रकार के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो सच में ऑथेंटिक है या नहीं वो पता ही नहीं चलता है। अब ये तो मैंने खुद पढ़ा है, वैशेषिक दर्शन मैंने पढ़ा है, इसमें कोई भी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ इस हिसाब से नहीं। जो उन्होंने कणाद लिख के जो लिखा हुआ है, वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं है। या वेग निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियमित, ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये कहीं पे भी नहीं है। और क्लियरली आगे देखिए वो देखते भी है, बोलते भी है कि दोस्तों, हमें विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि लॉ ऑफ मोशन की खोज न्यूटन ने की, परंतु आपको ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि लॉ ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन ने नहीं बल्कि भारतीय महर्षि कणाद ने किया हुआ है। कणाद ने बहुत सारे ऐसे किए हुए हैं, आचार्य कणाद ने वैशेषिक दर्शन में अलग अलग प्रकार से फिजिक्स दिए हुए हैं। लेकिन ये नहीं है, तो इसको बाहर लाके हम क्या करेंगे? ये एग्जैगरेशंस मुझे हर जगह पे दिखते हैं। और इसी के कारण आगे जाके अगर भारतीय ज्ञान परंपरा से किसी की श्रद्धा उठ जाती है, क्योंकि अगर वो झूठ पढ़ाया जाए तो विद्या का एक जिसे हम डिसरिस्पेक्ट कहेंगे, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम भारतीय ज्ञान का भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जैगरेशंस को टाले। ऐसे जो भी आपको कभी कभी होता होगा कि चलो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दे दीजिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, सबसे प्राइमरी सोर्स हमको पहले क्या दिखता है, तो वो है गूगल। उसके पास ना जाए, ऑथेंटिक बुक्स को खोले और उसमें से ही अगर रेफरेंस कहीं मिलता है तो वो हमें लेना चाहिए। अब ये सारी चीजें हमको पता है, लेकिन वो हम तक पहुंची क्यों नहीं? तो उसका कारण ये है, ये जो महापुरुष है ना लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने 1835 के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट seen one person who is beggar, who is thief, such wealth I have seen in this country, such uh, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country। वो तो कहते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे, लेकिन unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage, and therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and better than their own, they will lose their self-esteem। मतलब आत्मगौरव, हमारा आत्मगौरव हम भूल जाएंगे, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation। तो कह के किया हुआ है उन्होंने, तो कहा कि अगर इंग्लिश को बढ़ावा देंगे, इंग्लिश ही अच्छा है अगर ये सोचेंगे, तो अपना सब कुछ भूल जाएंगे। और वही हुआ। एक बार मैं विमान में जा रहा था और मुझे अचानक से एक मेरे बहुत पुराने मित्र मिल गए। तो मैंने उनसे कहा यार चलो साथ में बैठते हैं, बहुत दिनों बाद मिले। तो मेरी जो सीट थी उसके बगल वाली सीट को मैंने कहा कि आप थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे या कहीं आगे बैठ जाएंगे इनके सीट पे।
हम दोनों साथ में, हम साथ में बैठना चाहते हैं। तो मुझे उसने इतने ऐसे तरह से देखा जैसे मैं बहुत ही गंवार हूँ। तो मेरे साथ में जो मित्र थे वो बोले, अरे ऐसा नहीं। वो कहे कि अरे जेंटलमैन, कैन यू प्लीज सिट बैकवर्ड और फॉरवर्ड समवेयर ऑन माय सीट, वी आर टुगेदर एंड वी नीड टू सिट टुगेदर। तुरंत उसने कहा, या व्हाई नॉट। इंडियन ही था, ऐसा भी नहीं कि फॉरेनर था। लेकिन आज अगर आप इंग्लिश में बात करो तो आपको लगता है कि अच्छा, ये थोड़ा पढ़ा लिखा है। लेकिन भारतीय भाषा में बात करो तो आप गंवार हैं। ये नैरेटिव को हमें चेंज करना है। ये जो नैरेटिव सेट हुआ है, इसके कारण ही ये सारी चीजें वेस्टर्नाइज होने के जो कारण है ना, कि हमारे पास कुछ नहीं है, भारत के पास कुछ नहीं था, भारत के पास कोई ज्ञान नहीं था। ये सारी चीजें जो हम एक नैरेटिव से चलते आ रही है, ये इसी के कारण हुई है। और इसलिए हम नकल करते हैं तो अकल भी तो इस्तेमाल होनी चाहिए। अब आप देखिए, यूके यूएस में कांच की बिल्डिंगें बनती है। आप देखते हैं ना, कहीं पे भी देखते हैं, टीवी पे देखते हैं या कहीं देखते हैं, कांच की बिल्डिंग है, हर जगह कांच की बिल्डिंग। हमको बहुत अच्छा लगा वो देख के, हमने भी यहाँ पे बना ली। और पहले देखो तो सही, उन्होंने वहां पे क्यों बनाई। वहां पे जो सनलाइट है, जो सूर्य प्रकाश है, वो इतना नहीं है। उसको अंदर आने के लिए कांच की बिल्डिंगें बनाते हैं। यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस में कौन सी कांच की बिल्डिंग की हमको आवश्यकता है। कौन सा सूर्य प्रकाश हमें अंदर नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बना के ना शुरू कर दिया। तो हमारा जो ये एक क्रेज जो होती है ना हर चीज में, कि हम दिमाग इस्तेमाल ना करते हुए अचानक से जो वेस्ट कर रहा है उसी को लेके आ जाते हैं। इसके कारण हमारा जो आत्मगौरव है, जिन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को हम भुला देंगे, हम हमारी संस्कृति भूल गए। हमको नहीं समझ में आया कि इतना इंग्लिश कल्चर को क्यों बढ़ावा देना चाहिए। हमको नहीं समझ में आया कि हमारे बच्चे आज बाहर जाके, ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश आनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे आज अगर किसी भारतीय भाषा में कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हंसना है या रोना है, ये आज के जनरेशन का, आपने भी ये अनुभव किया होगा कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं वो। घर पे भी माता पिता एक दूसरे से हिंदी में या मराठी में या कोई भी जो भी उनकी जो मातृभाषा है उसमें बात करेंगे। लेकिन बच्चों से बात करना है तो फिर कम हियर, सेट, टेक दिस, ईट दिस। तो उनको अगर बाहर आप भेज रहे हैं, मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मराठी मीडियम में पढ़े हुए मेरे इतने सारे मित्र हैं जो आज मुझसे भी ज्यादा अच्छे इंग्लिश में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, लेकिन मातृभाषा कोई पढ़ाएगा तो हम हमारे घर से ही पढ़ा सकते हैं। घर एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे हम हमारी भारतीय भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका एक यही था कि मैकॉले ने यही जो किया, कि जिसको भारतीय भाषा आती है उसको, भारतीय भाषा जिसको आती है उसको टेक्नोलॉजी नहीं आती या साइंस नहीं आता। जिसको साइंस या टेक्नोलॉजी आती है उसको भारतीय भाषा नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जिसको संस्कृत आता है उसको ये सब नहीं आता, टेक्नोलॉजी नहीं आती। जिसको टेक्नोलॉजी आती है उसको संस्कृत नहीं आता। इन दोनों के बीच में अगर गैप आ जाती है तो ना इनोवेशन होता है, ना रिसर्च होता है। हम केवल केवल पॉलिटिसाइज करते रहेंगे। लेकिन आज जो रिसर्च इनोवेशन की जो हमारी जो आज रिसर्च इनोवेशन होने चाहिए वो नहीं होंगे। नासा ने एक पेपर पब्लिश किया है कि पुष्पक विमान जो रामायण में दिया है, उसके टेक्नोलॉजी जैसा हमने एक विमान तैयार किया। उसमें वो दिया हुआ है कि पुष्पक विमान का एक कैरेक्टरिस्टिक था, जितने लोग उसमें जाते जाएंगे उतना उतना उसका उसका जो घेर है वो बढ़ते जाता है, और जितने लोग कम होते जाएंगे उसका घेर कम होते जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी को लेकर नासा ने एक अलग प्रकार से ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया। ऐसा एक पेपर मैंने देखा था। तो हम हमारे ही जो संस्कृति के जो चीजें हैं वो नहीं देखते हैं, लेकिन बाहर के लोग एग्जैक्टली उस हिसाब से करके अपना अपना हिसाब से वो बना भी लेते हैं। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि वेद सबसे पुराने ग्रंथ है। अगर कोई सबसे पहला है तो वो है वेद। ये तो फिर से वेस्टर्न हिस्टोरियंस ही कहते हैं कि 1500 ईयर्स बिफोर वेद लिखे हुए थे। अब हमने क्या किया, वेदों को एक पर्टिकुलर अधिकार किसका है उसको एक उसमें बांध के एक जगह पे बैठ के उसको बिठा दिया, और कह दिया कि ये अधिकार सिर्फ इन्हीं लोगों का है, बाकी किसी का नहीं है। मैंने वेदों में एमए किया है, मैंने वेद पढ़े भी है। इसमें ना केवल ना कोई धर्म का उल्लेख है, ना जाति का उल्लेख है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना बौद्ध है, ना जैन है। इसमें केवल और केवल मनुष्य कल्याण की बातें हैं। केवल प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर पद्धति से बना के उसको बिठा के बंद कर दिया। एक एग्जाम्पल देखते हैं किस हिसाब से वेद आज भी हमें रिलेवेंट दिखते हैं। ऋग्वेद का एक सुंदर एक ये ऋचा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 51वां मंत्र क्या कहता है? समानम एतत् उदकम
उच्चैत्य वचाभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवम जिन्वन्ति अग्ने। अर्थ बताता हूँ। पहला अगर हम एक उसका पार्ट देखें, समानम एतत् उदकम, समान मतलब इक्वल, उदक मतलब पानी। अब जनरली सिक्स या सेवन स्टैंडर्ड की आप साइंस की किताब अगर खोल के देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि मास ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन दिस अर्थ, समान उदक, समानम एतत् उदकम। उसके बाद आता है उच्चैत्य वचा भी, उच्च मतलब ऊपर जाना, अव मतलब नीचे आना। तो क्या हो रहा है, ये पानी ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। उसके बाद है भूमि पर्जन्य जिन्वंती, भूमि मतलब अर्थ, पर्जन्य मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जिन्वंती मतलब सेटिस्फाई करता है, आता है। और आगे का है दिवम जिन्वंती अग्नया, दिवम मतलब आकाश, जिन्वंती मतलब फिर से सेटिस्फाई करता है या जाता है। अग्नया इसका मतलब है सूर्य के तेज से तपा हुआ पानी, जिसे हम आज इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये सब में हमें क्या मिला, वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल तो हम सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन वेद में अगर वाटर साइकिल मिल सकती है तो आप सोच सकते हैं कि केवल ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है, उसमें से एक मैंने अभी बताया। ये कितना साइंटिफिक है। ऐसे बहुत सारे हैं जो साइंस के साइंटिफिक ही हमें दिखते हैं, जो आज भी रिलेवेंट है। केवल यजुर्वेद में 2,000 से ज्यादा है, केवल अथर्ववेद में 7,000 से ज्यादा है। तो वेद किसी के एक के नहीं है, वेद में तो मनुष्य कल्याण है। अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, इसका इसका जो ज्ञान है वो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा ही हो गया ना। अगर हमको पढ़ना है तो हम कैसे भी करके पढ़ सकते हैं। हर चीज में बाहर, महाभारत घर पे मत रखो, बहुत ज्यादा क्या झगड़े होते हैं। अब महाभारत नहीं रखो तो झगड़े नहीं होते। तो हर चीज को हटाओ, इसको हटाओ उसको हटाओ, ऐसे करते करते हमने सारे ग्रंथ को बाहर कर दिए, उसमें से ज्ञान लिया ही नहीं। और फिर हमने कहा कि हमारे पास कोई ज्ञान था ही नहीं। अब देखिए, केवल वाटर को ये लोग वाटर कहते हैं, लेकिन हमारा कितना प्रॉस्परस था। हर चीज में पानी को भी, जैसे सब सरफेस वाटर है जो नदी से आया हुआ पानी है उसे कहते हैं नद्या, जो वर्षा से आया हुआ पानी है उसे कहेंगे वार्षिकी, जो डिपॉजिटेड वाटर है, जो वेल वाटर है उसे कहेंगे खनित्रिमा या आब्रुता। तो हमारे तो यहाँ तो एक शब्द के इतने अलग अलग शब्द, अलग अलग मीनिंग्स है। तो हमारा कितना प्रॉस्परस होगा, कितना समृद्ध हमारा ज्ञान होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एनाटॉमी, शरीर रचना शास्त्र। अब देखिए, ए विसालस ने 1543 में ये ह्यूमन स्केलेटन को बताया। इसको स्कल कहते हैं, इसको जो भी है पूरा एक पूरा बताया। लेकिन अथर्ववेद के 10.2.1 to 8, ये अगर आपने देखा तो आपने इसको, इसमें क्लियरली दिखता है कि कपालम, ललाटम, ककाटिका, जिह्वा, ऐसा ये सब इसको कहा गया है। और उसके बाद उसके फंक्शंस भी कहे हैं। अब अथर्ववेद तो 1543 से पहले है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हिस्टोरियंस कहते हैं। अगर 1500 ईयर्स बिफोर अगर वेद है तो 1543 में विसालस ने जो कहा ये वेदों में पहले से दिया हुआ है। तो ये अगर आज रिलेवेंट हो सकता है, इसका मतलब है कुछ तो है जो हमको एक पर्टिकुलर विद्या को लेने के लिए, हम जो ये करना चाहते थे उससे परे होकर हमको कुछ अलग ही मिला। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा दिया है वो इसी कारण है कि ये सब चीजें दूर रख के एक्चुअल ज्ञान क्या है और कहाँ पे है, और भारत के पास वो ज्ञान था वो आज कैसे रिलेवेंट है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अब धीरे धीरे, ये तो 1500 ईयर्स बिफोर की मैं बात करता रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि वेद जो है वो अनादि अनंत है। इसका किसी ने, ये तो मतलब मराठी में तो कहते हैं ये तो स्फुरले कोणाला तरी। लेकिन फिर भी हिस्टोरियंस के हिसाब से हम देखें तो 1500 ईयर्स बिफोर ये कहते हैं। अब धीरे धीरे उसके बाद जो सेकेंडरी टेक्स्ट है उसमें भी क्या क्या लिखा लिखा है वो देखते हैं। ये मैंने अभी अभी पढ़ा हुआ बहुत सुंदर पुस्तक है, युक्ति कल्पतरु नाम का ग्रंथ है। 15th सेंचुरी का ग्रंथ है। शुद्ध मोती की पहचान कैसे करनी चाहिए, ये इतने परफेक्ट पद्धति से इसने इसमें बताया हुआ है। शुद्ध मोती की पहचान कैसे करनी है, एक कॉयल जो है वो आर्टिफिशियल है या नहीं, उसका एक बहुत सुंदर तरीके से इसमें दिया हुआ है। अब आप देखिए कि एक ही श्लोक है, उसमें क्या कहा है, कहता है कि लवण और क्षार, लवण मतलब सॉल्ट, क्षार मतलब अल्कली, सॉल्ट एंड अल्कली से युक्त गोमूत्र में पहले उस मोती को डाले। उसके बाद अग्नि से उसे सुखाए या सूखे कपड़े से लपेट कर सुखाए। उसके बाद उस मोती को हाथ में लेकर व्रीहि मतलब चावल से घिसना चाहिए। और अगर वो आर्टिफिशियल है तो वो मोती टूट जाएगा, और अगर असली है तो चमकने लगेगा।
आप सोचिए, शुद्ध मोती की पहचान का जो टेक्नोलॉजी है वो अभी अभी की है, 100-200 साल पहले। लेकिन 15th सेंचुरी में युक्ति कल्पतरु नाम के ग्रंथ में, संस्कृत का जो ग्रंथ है, उसने बताया कि शुद्ध मोती की पहचान कैसे करनी चाहिए। तो आप सोचे हमारे पास कितना सारा ज्ञान होगा, जो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत संहिता में शरीर स्थानम करके जो एक यूनिट है, उसमें राइनोप्लास्टी के बारे में बताया हुआ है। राइनोप्लास्टी मतलब नाक की सर्जरी। अब नाक की सर्जरी की फिर से टेक्नोलॉजी आप देखो, 100-200 साल, 100 साल पहले ही आई हुई है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि श्रीदेवी है या और कोई है, उन्होंने नाक की सर्जरी की थी। तो नाक की सर्जरी का पूरा ये दो इसमें उन्होंने सुश्रुत संहिता में दिया है। अब आप देखिए, विडंबना देखिए, सुश्रुत संहिता ये BA MS को केवल एक सेमिस्टर में। जनरली लोग कहते हैं सुश्रुत संहिता पढ़ने के लिए 12 साल लगते हैं, लेकिन एक सेमिस्टर में सुश्रुत संहिता को दे दिया। उसमें भी जो BA MS में काम करने वाले लोग हैं, जो BA MS में क्यों एडमिशन लेते हैं? क्योंकि उनको MBBS में एडमिशन नहीं मिली, मार्क्स कम पड़ गए, तो चलो BA MS मिल रहा है तो ले लो। अब BA MS में राइनोप्लास्टी मतलब सुश्रुत संहिता एक एक सेमेस्टर में वो पढ़ते हैं। पूरा पढ़ते जो है वो क्या पढ़ते हैं, अब मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से हूं नहीं, लेकिन वो क्या पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, आज भी आयुर्वेद के इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो एलोपैथिक ही मेडिसिन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सब लोग नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ कुछ लोग, कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट ये करते हैं, ये लोग अपना MBBS की कुछ दवाइयां दे रहे हैं। तो ये सब अगर आप करते हैं, तो फिर आयुर्वेद कहाँ से प्रगल्भ होगा? लेकिन आयुर्वेद में जितना भी हमको बताया हुआ है या ये किया हुआ है, वो अगर आप ठीक तरह से BA MS जो आयुर्वेद की स्टडीज पढ़ रहे हैं उसमें अगर देखें, तो राइनोप्लास्टी इतना सुंदर उदाहरण है। और सुश्रुत संहिता में ऐसे कुछ बहुत सारे स्थानम का शरीर स्थानम है, अलग अलग प्रकार की यूनिट्स है, उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। तो हम देख रहे हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अलग अलग डोमेन्स में हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, वो अभी हम देख रहे हैं। तो राइनोप्लास्टी जो नाक की सर्जरी है वो हमें दिखती है। सुश्रुत संहिता में ही फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस को ट्रीटमेंट कैसे देना है वो भी बताया हुआ है, देखिए। तो ये जो मैंने डायग्राम ली है वो सुश्रुत संहिता से ली हुई है, कि टमस की कुशा बनाना। अब तब के जमाने में कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस तो था नहीं, तो उसी से चलाते थे कि महुआ, गूलर, पीपल, घाक, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है बड़ा सा, बहुत लोगों को पता भी होगा। बांस है, बाम्बू, सर्च और बड़ को कुशा बनाने के लिए लेना चाहिए। ये सुश्रुत संहिता के 2.3.6 में हम दे रहे हैं। मैं क्यों इतने रेफरेंसेस दे रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बच्चों को ये बताएं कि ऐसे सर सारी चीजें हो रही है, तो उसके रेफरेंसेस के साथ अगर कोई बच्चा घर पे जाके सच में उसके पास ये किताब है और उसने अगर पढ़ा, तो उसको समझना चाहिए कि हाँ, टीचर ने जो पढ़ाया हुआ है वो वो सही है। और इसी के रिलेटेड में मुझे और कुछ उसमें मदद हो सकती है, मैं उसमें और कुछ रिसर्च कर सकता हूँ। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक बहुत सुंदर प्रावधान हमें दिखता है कि तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम में होनी चाहिए। पहला है दृष्टि, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। किसी भी चीज को अगर हम देख रहे हैं, तो कैसे पता चलना चाहिए कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का है या नहीं? तो उसकी दृष्टि क्या है। दृष्टि अगर सही है तो वो IKS का है। दूसरा है परंपरा, ट्रेडिशन है कि नहीं, वो वो पहले से आया हुआ है कि नहीं, दूर मतलब एकदम पास का है क्या। बहुत सारे जगह पे मैंने देखा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का सिलेबस बना और स्वामी विवेकानंद जी डाल दिए। स्वामी विवेकानंद जी 18th सेंचुरी के थोड़े बाद के हैं। जनरली UGC के गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को 18th सेंचुरी के पहले जितने लोग जो भी ज्ञान था उसमें लाना चाहिए। तो हर चीज को हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस चीज में वो IKS आ रहा है। तो इसलिए ये जो है दृष्टि, परंपरा, और तीसरा है लौकिक प्रयोजन, इसका कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस है कि नहीं, आज वो इम्पोर्टेंट है, आज वो रिलेवेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर आप फिजिक्स की बात देखें, तो फिजिक्स न्यूटन जो वेस्टर्न फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा सामने चला गया है। इंडियन फिजिक्स का इतना कुछ है नहीं, तो वो थोड़ा बाद में पढ़ा है। लेकिन ये सारी चीजें जो है जो आज भी रिलेवेंट है, फ्रैक्चर्स डिसलोकेशंस का के बारे में अगर आज हमें दिखता है कि इसमें पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड और कुछ रिसर्च या इनोवेशन कुछ हो सकते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं जो आयुर्वेद का है, वो है ये क्रोनो न्यूट्रिशन। अब देखिए, क्रोनो न्यूट्रिशन ये एक इमर्जिंग फील्ड है।
that builds on the relationship between temporal eating patterns, circadian rhythms and metabolic health. पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बड़ा है। देखिए ना, आपके आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्काइडियन रिदम, इसका एक बड़ा सा एक चार्ट भी बना के ऐसा बहुत बड़ा बड़ा कुछ कुछ लिया हुआ है, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही बोला हुआ है कि 2 टाइम खाओ, एक सुबह खाओ एक शाम को खाओ। ये तो महाभारत में कहा हुआ है शांति पर्व में 193.10 कि सायं प्रातः मनुष्याणाम भोजनम वेद निर्मितम। मनुष्य को 2 ही टाइम खाना चाहिए, सायं और प्रातः। और वो भी होशियार थे, उन्होंने बिब्लियोग्राफी साइड में ही दे दी। वो कहते हैं वेद निर्मितम, इट्स ए वेजिंग इंजंक्शन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नान्तरा भोजनम कुर्यात उपवासी तथा भवेत, उन दोनों के बीच में जो भी है उसे उपवास कंसिडर करना चाहिए, फास्टिंग उसमें आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये क्या हो रहा है कि हमारे जो वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है, वेस्टर्न लोग जो है, ये अपनी तरीके से कुछ ना कुछ एक बना के उसका पैकेज अलग करते हैं और हमारे पास आ जाता है। ये हमारा ही ज्ञान है जो वो लोग भेज रहे हैं। ठीक है। मेंटल हेल्थ आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग पद्धति से, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज में बहुत बिजी रहते हैं, तो हम लंच स्किप कर देते हैं। अब जनरली जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक टेंडेंसी होती है वो अडेप्ट करता है कुछ भी चीजें जल्दी से। तो पहली बार कोई तकलीफ नहीं होती, धीरे धीरे हम लंच स्किप करते जाते हैं, तो वो अडेप्ट हो जाता है, फिर हमें उस टाइम भूख ही नहीं लगती। ऐसे करते करते एकदम से कई फिर वो शुगर निकलती है 200। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों कहा गया है डायबिटीज को? क्योंकि हम लाइफस्टाइल ही उसकी बदल गई है। बहुत काम है इसलिए खाना नहीं खाना, लंच स्किप कर देना या डिनर स्किप कर देना या मील स्किप कर देना। इससे क्या होता है कि आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि फिजिकल हेल्थ ही सिर्फ काम में नहीं आनी चाहिए, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते समय, मतलब भूख लगने के बाद आपको इमोशनली भी आप चिड़चिड़ भी करते हैं। बहुत सारे लोग चिड़चिड़ करते हैं, इससे चिड़चिड़ी सी हो जाती है, खाना खाने के बाद अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें भी मेंटल हेल्थ के बारे में आयुर्वेद में बताया हुआ है। ये मैंने स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट हिसाब से ली है कि भृगु संहिता, आचार्य भृगु नाम के एक थे जिन्होंने एग्रीकल्चर, कृषि पे बहुत सुंदर काम किया हुआ है। उनके पूरे खंड है, उनकी एक संहिता है भृगु संहिता, और उसका पूरा खंड है। लेकिन अ, उसमें पहले ही चैप्टर के पहले ही श्लोक में उन्होंने कृषि क्या है वो बता दिया है। वो कहते हैं वृक्ष आदि प्रसव आरोप पालन आदि क्रिया कृषि ही। मतलब वृक्ष आदि मतलब वनस्पति, और एनिमल हस्बेंड्री भी, जिसे हम पशु विज्ञान भी कहते हैं। तो वृक्ष आदि मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड प्लांट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। प्रसव मतलब उनके उनके जन्म से लेके, आरोप पालन आदि क्रिया, उनके जन्म से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए जो भी चाहिए, वो जितनी भी प्रोसेस हमें दिखती है उसे कृषि कहना चाहिए। ऐसा भृगु संहिता के पहले ही अध्याय के पहले चैप्टर में दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कृषि मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे, मैंने तो भी ऐसा देखा है। अब मैं इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, मैं जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमें सारे सब्जेक्ट्स कॉमन थे, उसमें मैकेनिक्स भी था। मुझे मैकेनिक्स नहीं समझता था, लेकिन फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। मैकेनिक्स के टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा पढ़ाने के बाद लास्ट में उन्होंने पूछा किसी को कुछ प्रश्न पूछना है। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैकेनिक्स को मैकेनिक्स क्यों कहते हैं? तो बोलते क्लास के बाहर जाओ। तो अगर हमने पढ़े, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको वो क्यों कहते हैं अगर वो बताया नहीं, तो हमारे यहाँ पे आप देखें, भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा कहीं पे भी दिखता है। चरक संहिता अगर आप खोल के देखें तो स्वस्थ की डेफिनेशन बताई हुई है, सुश्रुत संहिता में स्वस्थ की डेफिनेशन बताई हुई है, भृगु संहिता में कृषि रिलेटेड, कृषि क्या है ये पहले ही चैप्टर में उन्होंने बता दिया है। तो हमें भी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको वो क्यों कहते हैं, फिजिक्स को फिजिक्स क्यों कहते हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, आर्किटेक्चर को आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं, ये हम हमारे भी क्लास में हम पढ़ा, हमको बच्चों को बताना चाहिए कि इसको हम क्यों कहते हैं। उससे उसका ये भी एक है कि पहले के जमाने में ये ऐसे बताते थे। उसके बाद उसमें एग्रीकल्चर में सॉइल एंड इट्स टाइप्स के बारे में बहुत सारी चीजें जो यजुर्वेद में दी हुई है, कि उर्वरा मतलब लोग, मृद मतलब क्ले, रजस मतलब चौकी सॉइल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हमारे इसमें बहुत सारे लोगों ने अगर रुद्राष्टक अगर पढ़ा है तो रुद्राष्टक में ये सारी चीजें आती है, सिकताष्टमे पर्वताष्टमे,
गिरयष्टमे या हिरण्याय च प्रपत्याय च सिकत्याय च प्रवायाय च षष्ठाय च फेन्याय च, ये सारी चीजें आती है जो आज रिलेवेंट है, जो सॉइल के टाइप्स के बारे में उनको बताती है। मेटलर्जी में अगर आप देखें तो मेटलर्जी में भी हमारे हम बहुत ज्यादा अव्वल स्थान पे थे। रसरत्न समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है, इसमें बताया हुआ है कि जिंक स्मेल्टिंग जो होता था, ये केवल और केवल भारत के पास ये टेक्निक थी। अब स्मेल्टिंग मतलब क्या, जिसको पता नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ। जिंक स्मेल्टिंग मतलब जिंक ओर निकालना। तो कोई भी जो धातु होता है ना, उसका ओर निकाला जाता है। मतलब उस धातु को तपाते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है, और फिर और तपाने के बाद जब वो इवेपोरेट होता है, गैसियस फॉर्म में जाता है, तो इवेपोरेशन में उसके पार्टिकल्स को पकड़ के उसको कूल कर देना, वो हो गया ओर निकालना। तो आयरन और मैंगनीज और ये सारा और जितना भी है 15th सेंचुरी की बात है, ये विश्व में सबको आता था। लेकिन जिंक को स्मेल्ट करना किसी को नहीं आता था, वो केवल भारत को आता था। राजस्थान में एक जवर करके जगह है, वहां पे ये यंत्र हमें दिखता है और अभी भी वहां पे काम चल रहा है। बहुत पुराना है, लेकिन ये यंत्र अभी एक शो के इसमें रखा हुआ है उन्होंने, कि तब के जमाने में जिंक को स्मेल्ट कैसे करते थे। तो क्या होता था, उसकी टेक्निक है। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 400, वो है 410 डिग्री, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 930 डिग्रीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि 550 डिग्री सेल्सियस पे जिंक जब इवेपोरेट होते होने लगता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। अगर आपको जिंक और निकालना है, तो 550 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर्स निकलते हैं, तभी के तभी उसको पकड़ के उसको कूल करना है, तो ही हमें जिंक स्मेल्टिंग मिलेगा। अब ये 15th सेंचुरी में किसी विश्व में किसी को नहीं आता था, है ना। तो जब अब ये नहीं आता था, तो लोगों ने यहाँ पे देखा, भारत की तरफ देखा। तो भारत में ये आता था, इन्होंने क्या किया, कॉमन सेंस यूज किया, नीचे से तपाया और ऊपर जो इवेपोरेशन जो पार्टिकल्स है उसको कलेक्ट किया। ऐसा पहले करते थे। हमने क्या किया, इसको अपसाइड डाउन कर दिया, इसलिए उसको डाउनवर्ड ड्रिप रिडक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। ऊपर से तपाया, और नीचे जैसे 550 डिग्री सेल्सियस पे वो इवेपोरेट होकर नीचे गिरता था, उसको फट से पकड़ के कूल कर देते थे। हो गया जिंक स्मेल्टिंग। अब जिंक स्मेल्टिंग जैसा इतना इंपॉर्टेंट अगर हमें मिलता है, तो इसका मतलब है कि अ, बहुत सारी चीजें जो थी वो हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे ग्रंथों में मिलती थी, लेकिन मैक्रो एजुकेशन सिस्टम की वजह से कभी हमको ये पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हमारे पास है। मेटलर्जी में भी हमारा स्थान बहुत सही था। अब मेटलर्जी में ये भी देखिए, आयरन पिलर बहुत सारी जगहों पर सबको पता होगा, कुतुब मीनार के सामने रखा हुआ है, दिल्ली में है, 5th सेंचुरी का है। और 5th सेंचुरी से ये मतलब ऑलमोस्ट 99.72% प्योर आयरन से बना हुआ है। लेकिन धूप पे खड़ा है, वर्षा में खड़ा है, कोरोजन फ्री है। तो इसलिए ये जितना भी हमें दिखता है, आयरन पिलर के बारे में पूरा पढ़ूंगा नहीं मैं, सबको पता भी होगा। लेकिन ऐसे आयरन पिलर्स बनने चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में दिए हुए हैं कि कैसे बनाना है। अगर आयरन, कोरोजन फ्री आयरन अगर मिल सकता है, तो इतने सारे ब्रिजेस हम देखते हैं कि उसके ब्रिज टूट गए, या ब्रिज ब्रिज टूट के लोग नीचे मर रहे हैं। ये तो अगर हमको पता रहता कि कोरोजन फ्री है, तो मे भी बहुत अच्छा कुछ हो सकता था। तो ये सारा ज्ञान हमारे पास था, हमारे ग्रंथों में ये सारा ज्ञान हमें मिलता है। कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स है आईकेएस को लेके, हम समाप्ति की ओर ही चलेंगे, किसी को भी प्रश्न है तो बाद में पूछ सकता है। अब जनरली कहते हैं कि आईकेएस डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है, तो आईकेएस डिसिप्लिन या सब्जेक्ट नहीं है। आईकेएस तो एक लेवल है जो इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन को दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक डिसिप्लिन आया हुआ है, उसे कहते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। पाणिनि अष्टाध्यायी जो संस्कृत ग्रामर है वो, और कंप्यूटर साइंस, इसको दोनों को मिला के एक अलग ही डिसिप्लिन तैयार हुआ है, उसे कहते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। और वो चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आईकेएस ये डिसिप्लिन है। अब टू क्रेडिट कोर्स इसलिए कंपलसरी किया हुआ है यूजीसी ने, ताकि एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या है, उसका अवेयरनेस तो आना चाहिए बाहर। ये देखिए, आईकेएस कॉर्पस है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन बाय प्रोफेसर बी महादेवन, इनके बुक में हमें मिलता है। इतने अलग प्रकार से आईकेएस को लिटरेरी और नॉन लिटरेरी ऐसे पद्धति से उसको डिवाइड किया है, और ऐसे अलग अलग पद्धति से हमें टेक्स्ट भी मिलते हैं।
दूसरा मिथ है आईकेएस संस्कृत है। अब जैसे मैंने अभी पूरा आपको बताया वो तो संस्कृत में था, तो संस्कृत में बहुत सा अवेलेबल है मटेरियल, इसलिए संस्कृत से ले रहे हैं। संस्कृत तो एक भाषा है जो हमने कहा, लेकिन आईकेएस रिलेटेड जो भी वर्क है वो बहुत बार संस्कृत से रिलेटेड हमें मिलता है, इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को संस्कृत में हमें दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसमें ब्रज या हिंदी में आप अगर देखें तो आपको ये मिलेगा। तमिल में इतने सारे ग्रंथ हैं, कन्नड़ा में इतने सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं। 119 जो भी नंबर है ना आपका, जो भी है, तो यहाँ पे जो पेन से जो आप लिख रहे हैं वो ना करें। धन्यवाद। कन्नड़ा में ये सारे ग्रंथ मिलते हैं, तेलुगु में ये सारे ग्रंथ है, मराठी में इतने सारे ग्रंथ है, मलयालम में है, मणिपुरी में है। मणिपुरी में तो एक नुमित कप्पा नाम का एक ग्रंथ है 1st सेंचुरी का, वो ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी पे है। अगर आप कहीं पे भी आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं। इसलिए संस्कृत में ही सब कुछ ऐसा नहीं है, भारतीय भाषा में बहुत सारे ऐसे इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड ग्रंथ है जो आज भी बहुत रिलेवेंट दिखते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईके स्पिरिचुअलिज्म है, तो ऐसा तो है नहीं। जितने भी हमने थोड़े से एग्जांपल्स देखे, इसमें लिंग्विस्टिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, हेल्थ साइंसेस हमें मिलता है, मैथमेटिक्स दिखता है, पोएट्री है, मेटलर्जी है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हमें आईकेएस के बारे में कुछ कुछ चीजें मिलती है। ये देखिए, 3000 BC के पहले इतने सारे टेक्स्ट थे। 3000 BC टू 500 CE के बीच में वेदांग ज्योतिष से लेके जितने भी ग्रंथ है उसमें हमें हेल्थ मिलता है, लिंग्विस्टिक्स मिलते हैं, फिलोसॉफी है, अलग अलग पद्धति से कुछ ना कुछ मिलता है। उसके बाद 500 CE टू 1800 CE के बीच में आर्यभट्टीय से लेके ये सारे ग्रंथ है, जिसका शिप बिल्डिंग के बारे में है। जो युक्ति बल कल्पतरु जो मैंने ग्रंथ बताया, वो शिप बिल्डिंग के हिसाब से है। ओशनिक स्टडी, मतलब जितना भी पानी है, पानी के नीचे का जो भी विज्ञान है उसके बारे में ये सारा टेक्स्ट बताता है। तो ये सारी चीजें हमें कभी 10th 12th और पूरे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हमें कभी दिखी ही नहीं, और उसके कारण ये हम कभी पढ़ नहीं पाए। मे भी ये पढ़ने के बाद हमें कुछ रिसर्च या इनोवेशन मिल सकता है। तीन महत्वपूर्ण स्तंभ है अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को आपको पढ़ना है, तो वो है आचार। जिस आचरण के बारे में मैंने बात की, तो आज के विद्यार्थियों को आचार इस हिसाब से आना चाहिए ताकि अ, जो भी हम उनका आचरण है वो सिर्फ आईकेएस को लाने से और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आईकेएस कहाँ पे ये लेने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों को अंदर से भी कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ को, ऐसे जैसे आचार है, दूसरा विचार है, और तीसरा व्यवहार है, ये तीन में भी अच्छा आना चाहिए, तो जाके हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को अच्छी तरीके से ऊपर ला पाएंगे। व्यवहार तो बहुत बार अभारतीय व्यवहार हमें दिखता है। इसका एक एग्जाम्पल है, 9/11 जब हुआ था ना, यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, तब दूसरे दिन पेपर में जॉर्ज बुश जो तब के प्रेसिडेंट थे, उनका एक पेपर में एक ये आया, न्यूज आया। उन्होंने कहा कि यूएस के लोगों को उन्होंने कहा कि गो आउट फॉर शॉपिंग। अब लोग कहेंगे कि लोग तब उस समय कहे कि "यार, हमारे इतने सारे लोग मर गए हैं, कल कल ऐसा कुछ हादसा हुआ, इसमें इतने सारे लोग मर गए और आप हमें शॉपिंग करने के लिए क्यों कह रहे हैं?" तो वो इसलिए शॉपिंग करने के लिए कह रहे थे ताकि उनकी इकोनॉमी गिर गई थी, और अगर ये लोग शॉपिंग करते हैं तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। उसी इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यवहार जो देश के, समाज के और परिवार के हित में ना हो, वो अभारतीय समझना चाहिए। इसलिए भारतीय व्यवहार और अभारतीय व्यवहार में ये फर्क है, और इसके कारण हमें आचार विचार और व्यवहार हम हमारे दिमाग में अच्छे रहने चाहिए, विचार हमारे अच्छे रहने चाहिए। रावण को 10 सर थे बोलने से बायोलॉजिकली थोड़ी ना थे, वो तो 10 डायरेक्शन में विचार कर सकता था, इसलिए उनका उसका जो विचार था वो प्रगल्भ था, ऐसा कहते हैं। तो किसमें जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में क्या कहती है कि इट शुड बी टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्योंकि दो अलग अलग डिसिप्लिन के लोग सब साथ में आएंगे तो जाके कुछ अलग पद्धति से कुछ बनेगा। जैसे टाउन प्लानिंग और शिल्प शास्त्र, ये दो अगर डिसिप्लिन साथ में लाते हैं तो मे भी हमें टाउन प्लानिंग का कुछ अलग प्रकार से कुछ नया ही कुछ देखने को मिलेगा। इसके रिसर्च और इनोवेशन तो होने चाहिए। और प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर, भारतीय भाषा को बढ़ावा देना। अब देखिए, इंजीनियरिंग में तो एआईसीटी ने पूरा इंजीनियरिंग सिलेबस जो है वो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। तो जो हम कितने भी यहाँ पे बैठे हुए जो लोग थे,
पहले हम ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप स्टडी करते थे। अब ग्रुप स्टडी में तो हम एक दूसरे से जब बात करते थे तो वो तो भारतीय भाषा में ही करते थे, फिर हम जाके इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिखते थे। तो अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं तो मातृभाषा में या भारतीय भाषा में ही उसको समझने चाहिए, और उसके बाद उसका जो भी है वो मतलब अगर भारतीय भाषा में अगर लिख पाते तो अच्छा ही है। ये एक अ, ये अगर मैं मिटा पाऊँ तो शायद मैं मिटा पाऊंगा। जी, ये एक वीडियो है 2 मिनट का, वो हम देखेंगे, और फिर अगर किसी को अगर कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं। इसमें केवल पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है। जो भी वीडियो में है वो आपको नीचे दिखेगा, वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम अभी ले सकते हैं। रफी सर, आई हैव डन माय Yes, sir.
हेलो। हाँ यस, सो I've done with my session. अगर किसको भी प्रश्न होंगे तो they can ask. ये सर आपका अपन अनम्यूट करते हैं सर, एक मिनट। पार्टिसिपेंट का कुछ क्वेश्चन है क्या? आप आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं। Hello. यस, बोलिए सर। हाँ First of all, I would like to thank you for the informative session, sir. I am Dr. Dhanajit Thore from Dharashu. Actually, I was going through your PPT and it was very nicely you presented, and of course, with the reference, you have put all the knowledge in front of us. Definitely, I myself feel that Indian knowledge system is known today by all of the participants. My point is what I observed in your presentation, sir. As you said, न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन की खोज नहीं की है, वो कनात का अपना अपने रेफरेंस दिया, वो भी मतलब रेफरेंस दिया है, तो दैट्स द रियलिटी, नोबडी कैन अवॉइड इट। लेकिन ये अगर इस तरह से होता रहा तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, एज यू सेड, संस्कृत और बाकी भी रेफरेंस आपने दिए, तो ये लिटरेचर अदर देन साइंस और साइंस स्पेशली इन फिजिक्स, तो इन दोनों के बीच झगड़ा लगाने वाला काम हो सकता है सर। इस पे अगर कोई कॉन्क्रीट डिबेट हो या डिस्कशन हो, तो ये हाई लेवल पे एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस होना चाहिए था, लेकिन एज पर अवर नॉलेज ये नहीं हुआ। तो ये अभी हमारे यूनिवर्सिटी ने ये जो एफडीपी प्रोग्राम किया है, तो इसका जो कॉन्क्रीट सारांश निकलेगा, डेफिनेटली आपके लेक्चर से कुछ नया सीखने को हम सभी को मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट से, डायरेक्टर साहब से, कि इस पे भी एक वर्कशॉप या सेमिनार कॉन्फ्रेंस जो भी हो ऑर्गेनाइज करके इसका एक डीपेस्ट नॉलेज हमें और प्राप्त करके दे दें। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग योर लेक्चर सर, थैंक यू सो मच। thank you so much. Okay, if there are no more questions we can stop. यस सर, थैंक यू सर। Thank you. अभी आप लीव कर सकते हैं सर आप। यस, थैंक यू सर।